Yeah, good evening all. Thank you for joining in time, those who have joined. We'll wait for another 5 minutes or so, and then we'll start with the session. Good evening, everyone. Good evening, good evening. Anybody wants to share any feedback? Yeah, we started that like initially the counselor used to explain only in words, and occasionally only he used to show the video by Alcon people. But now we have started communicating in all aspect, like the mobile part. We have few photos which shows the difference between the aspheric lens and the normal lens, or so that makes an impact. Probably people are more related to the mobile. We are so much connected to the mobile that people correlate it. And I feel they used to feel the paperwork, they used to see everything is so monotonous everywhere. Na? So that made a difference. Yes, that definitely made a difference. Great, great. Any other feedback from any other participant? Another one more thing was that when you said about the USP, then I really thought upon it, and actually we were just not offering any USP. It was just the same thing which everybody says right now: phaco and foldable and hydrophobic and multifocal and no patch, no injection. Everything is common right now. So there was no USP actually. What is the advantage over the other? We didn't. And personally, for my part, yes, I took that point quite seriously. Even if the patient has come for anybody else, if you treat properly, communicate properly, they have an overall image of the place, which will help in future. So yes, that is what I realized. That is probably I was missing in last few years. Like whenever there was just a simple glasses, we used to be so indifferent. Okay, just for near vision correction or maybe a simple allergy, we used to be very indifferent to those patients. हाँ ठीक है चश्मा है and that. So probably that was a part which I need to work upon. Personally, I felt I need to work upon more on that part also. Very true, very true. See, today's session we are going to help you in finding your own USPs. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया, आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि आप खुद से सोचिए और अपनी प्रैक्टिस की क्या यूएसपीज है, अगर आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं अच्छी बात है. If not, if you are not able to do so, then we will see, I mean, how we find out. Generally हर एक प्रैक्टिस में कुछ यूएसपी रहती है. So that is what our today's session is going to take care of. So just wait for a few moments and we will see how we find out USPs of our practice. Any other feedback? Yes, Mr. Talwar, your feedback, sir. You can unmute yourself and share your feedback. So I liked how you talked about different buckets or different categories of lenses or whatever procedure you're offering, and how you can direct the patient's attention towards one of them without making it very obvious in a very subtle way. So that I thought was very nice. I never thought of such a thing before. But one thing I often face is that the patient asks me directly as a doctor, "Sabse acha kya hai, mujhe aap bataye." They ask such a question. In such a situation, what are we to do? Are we to make a conclusion as to this is such and such a patient, I should advise this, or still we should tell all the options? We'll keep this question on hold for a few moments, because Okay. this is a very common question asked by patients, not only to doctors but even counselors.
So let everybody get benefited out of this answer. I mean, very common question. You have pointed out. So just remind me if I forget later on. Just remind me to answer this particular question. Let One more more thing people I join. really liked is that you talked about counselor's job is to work for the patient's experience. So that was very good. Yes. Because when we were medical students, we learned that you are not working for a consultant or for the head or for the ward nurse, you are working for the patient. This is the counselor's equivalent of that same concept, that they're actually working for the patient. So they should not feel that it's a very honorable and noble job what they're doing, that they should be able to feel. Correct, sir. So that is what we are trying to inculcate through these 12 sessions, because usually what I have seen is they are more into 10 to 6 or 9 to 5 job kind of mentality, and this bas roz aana hai, wahi karna hai, wahi घिसा पीटा टेप हर एक पेशेंट के सामने बजाना है, but then that's not the whole purpose of your position. So that is what we are trying to inculcate and reinforce through these sessions. And it is very important for a counselor to understand कि आप अपने सर्जन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, because your surgeon cannot devote time, that much share time to patient, each and every patient, you are there. So as a patient अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि जितना सेटिस्फेक्शन मुझे डॉक्टर साहब से बात करके मिलेगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे आपके काउंसलर से बात करके मिलना चाहिए. So that is what your effort should be always. Thank you, sir. Yes, sir. Most welcome. I think we have 20 on board. We'll wait for just 2 minutes more and then we'll start with the session, because again, aaj ka session is going to be quite, intensive and more interesting. We'll wait for 2 minutes more maximum, right? I'll be back in a couple of minutes. Yeah, once again, good evening all. So we'll start with the session. Let people join in. Mr. Hari, are you around? Yeah, I think they have one more session simultaneously going on for ophthalmologists on ethical digital marketing. So Ophthall people might be busy in handling both the sessions. I'll try to handle this session, I mean technical parts, because there are people coming in, then I have to admit them simultaneously. So just excuse me if my attention is diverted in between. It's a tough job. I have to do that. Okay. So can you make me as a Sir Suren here from can you make me a host before I can able to? You are not I'm the there. host, Mr. Suren. Just a moment. Yeah. So thank you, Mr. Suren. That's a big responsibility you have taken.
Okay. So welcome you all to this. I guess it's ninth session of this wonderful program, and the program is going on wonderfully. The kind of feedbacks I have been getting, and on board and then off board also. Today's session, there is not going to be any PowerPoint presentation. It's going to be open discussion and brainstorming. So my usual request, it really does not interest me to talk to the thumbnails. So come on, quickly come on board, all of you. So see, every time I request, very few people come on board. So today I would request all of you to come on board, and then irrespective of where you are sitting, what you are wearing. See, today I am sitting in my children's bedroom, so you can imagine my guts. So usually kids' bedrooms are in horrible condition, but still, I had no place to sit. I am sitting here. So come on, everybody on board, and then only we'll be able to make this session as interactive as possible. सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए. Unless and until you are driving, आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो भी चलेगा. You just listen, and once you reach, you can switch on your camera. But otherwise, I can see Miss Vinita. She is walking home, and still she has switched on the camera. Very good. But you just be aware while walking. Achha, she disappeared. No, you can switch on the camera, no problem. Ms. Nancy, Mr. Jagdeep, Dr. Sandhya, Ms. Sarita Kumari, Dr. Jai Kishan sir, Diksha Tiwari, Mr. Vijay Ahuja, Ms. Swati Mehra. Come on, all of you. So just give me 5 minutes. I'm with patient right now. Okay, no issues, no issues. I know, every time you are on board, just reminded you. Thank you. You can take your time, no issues. Very good. Still, I can see a lot of people, with switched off cameras. See, again, to remind you all, this is going to be interactive session. There is no PowerPoint presentation today. So, we will be interacting face to face, and I would require a lot of input from your end also. This session, आज के सेशन में हम लोग दो चीजों पे ध्यान देने वाले हैं. One is the counseling material. Counseling करते समय कौन सी चीजें हमें हेल्पफुल हो सकती है. What all material we can. There is a message from Swati Mehra. I'm not able to either unmute or start my video. Mr. Suren, can you just look into the matter? Ms. Swati Mehra is unable to unmute and switch on the video. Mr. Suren. Yeah. Ms. Swati, he'll help you out. Don't worry. तो आज के सेशन में Yes, sir, I will do that. Yeah, thank you. आज के सेशन में anybody else who is facing such problem, just let us know. We'll try and figure it out. तो आज के सेशन में we are going to take care of two things basically. Number one is, as I said last time, USPs, unique selling points of your practice. Basically, as a counselor, हम लोग काफी सारी चीजें करते हैं. हम लोग प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, हम लोग अवेलेबल ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं. वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टॉक अबाउट द IOL ऑप्शंस. लेकिन ये सारी चीजें आमतौर पे एवरी काउंसलर डज. ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, अगर मैं आपको किसी आपके सेंटर से उठा करके पड़ोस के सेंटर में रख दूंगा तो your role remains same or your script remains same. आप अपने सेंटर में अलग से क्या पेशेंट को दे रहे हैं, ये फाइंड आउट करना और वो प्रोजेक्ट करना becomes very much important. Yeah, Ms. Swati, you can just connect with Mr. Suren. He is on the group, or maybe you can call him. He will call you. Don't worry. You'll be able to join. Okay. तो
वो उन चीजों को हम लोग बोलते हैं यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स. एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज द काउंसलिंग मटेरियल. कौन सी चीजों को लेकर के हम लोग काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कर सकते हैं. There are various things which are used during counseling. आप लोग भी कई सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे. Unfortunately, only 2 people sent photographs of their counseling stations. This is really, disappointing for me because, मैंने आपको last time ही बताया था. Next time there is not going to be any PowerPoint presentation. We will be discussing based upon whatever inputs you give. तो उन सारी चीजों को लेकर के हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते थे, बट देन हार्डली 2 people have sent their photographs. Anyways, I mean, if you all really need inputs, you can still send me personal message करके मुझे आप अपने फोटोग्राफ्स भेजिए, काउंसलिंग मटेरियल भेजिए. आज के सेशन में जितने लोग हॉस्पिटल में बैठ के ये सेशन देख रहे हैं, मैंने जैसे मैसेज भेजा था, जस्ट बी रेडी विथ व्हाट एवर यू आर यूजिंग राइट नाउ एज काउंसलिंग मटेरियल, सो दैट वी कैन शेयर विथ अदर पीपल ऑल्सो कि कुछ अलग चीजें अगर आप कर रहे हो तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द होल ग्रुप. So we'll start with today's session with our first point, that is USPs of your practice. Still, I can see hardly 7-8 members who have switched on their cameras. So again and again, I am requesting you all to kindly come on board. Those who are not able to join, just let us know, as Ms. Swati. हेलो जी सर. Yeah. सर एक्चुअली मैं लक्ष्मी सेंटर से बोल रहा हूँ, दिनेश सर जी. सर मैं कल के दिन में नहीं हो पाऊंगा ना जी, क्योंकि मेरे को कल छुट्टी होता ना सर. ओके. तो कल कैसे कर सकते हैं सर? घर से जो लॉग इन कीजिए, हो पाएगा सर. कल का दिन छुट्टी होता है ना. आप कुल्लू से हो शायद, राइट? कुल्लू से सर. या लास्ट संडे डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया था आपके बिहाफ पे. डोंट वरी, अगर आप घर से ज्वाइन कर पाओगे तो अच्छी बात है. अगर नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगा. ओनली प्रॉब्लम इज कल मॉक सेशंस रहेंगे, तो अगर आपकी इच्छा है पार्टिसिपेट करने की तो आपको कुछ ना कुछ करके ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा. ठीक है ना? It will be better if you join in so that mock session में आप participate कर पाओगे, है ना? जी. तो अगर as an exception अगर कल आप हॉस्पिटल आ सकते हो, अगर आपके घर पे नेटवर्क इश्यू है. कल छुट्टी रहता है सर यहाँ पर ना संडे को. मेरे लिए आ जाइए ना, डॉक्टर साहब खोल देंगे दवाखाना, नो इश्यूज. ठीक है. ओके सर. या फाइन. So we will start with USPs, that is unique selling points. See, basically unique selling points जो है वो ना सिर्फ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं या फिर आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उनमें होते हैं. ना समझिए कि आपके शहर में you are the only practice who's offering options like premium IOLs like toric या फिर multifocals. वही सिर्फ USPs नहीं होते हैं. USPs can be anything that is different from your competitor or other practice. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर आप अपने पेशेंट का एक्सपीरियंस डिजाइन करके उसको कुछ अलग हटके एक्सपीरियंस दे सकते हैं ऑन द डे ऑफ सर्जरी, बिफोर सर्जरी एंड इवन आफ्टर सर्जरी. आप अगर पूरा ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस डिजाइन करके उसको वो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं, देन दैट बिकम्स यूएसपी ऑफ योर हॉस्पिटल. 2 एग्जांपल्स मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि वो यूएसपी उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को पता भी नहीं था कि दैट इज देयर यूएसपी, बट देन एज अ प्रोटोकॉल वो ये चीजें कर रहे थे. वेरी स्मॉल थिंग, बट देन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. आई हैड वन क्लाइंट इन गुजरात. वो डॉक्टर काफी सीनियर डॉक्टर है और आई थिंक उनकी प्रैक्टिस रहेगी लगभग 40-45 इयर्स की प्रैक्टिस है उनकी.
ठीक है ना। लास्ट 40-45 ईयर्स प्रैक्टिस के पहले दिन से उनको एक आदत है कि प्रीवियस नाइट ऑफ सर्जरी, प्रीवियस नाइट वो घर पे सारे के सारे एमआरडी पेपर्स लेके जाते हैं, और कितना भी लेट हो, मैं जब विजिट पे होता था तो हमारी मीटिंग्स चलती थी 11, 11, 11:30 बजे तक। तो वी यूज्ड टू डिस्कस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस टिल 11, 11:30 ओवर द डिनर, पोस्ट डिनर। लेकिन कितना भी लेट हो, वो सोने से पहले कल के सर्जरी के सारे पेपर्स स्क्रीन करेंगे, एंड ही विल have his mental plan ready for the next OT day. This is very small point, लेकिन ये चीज काउंसलर्स को पता थी, पूरे स्टाफ को पता थी, बट उनको ये पता नहीं था कि दैट इज देयर यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डिटेल्स, बट द पेशेंट वाज वन आइड, ठीक है ना, और एक ही मतलब दूसरे आंख का ऑपरेशन नेक्स्ट डे प्लान था, कैटरैक्ट का ऑपरेशन नेक्स्ट डे प्लान था। ड्यूरिंग प्लान लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आईएल सिलेक्शन और काउंसलिंग काउंसलर के पास होता था। आईएल सिलेक्शन जो है वो पेशेंट के मर्जी के हिसाब से होता था, एंड देन दे वर एक्सेप्टिंग कि उस पेशेंट ने ये आईएल सिलेक्ट किया है, सो वी आर ओके विद इट, हम लोग आपको ये आईएल डलवाएं। तो एक पर्टिकुलर कोई आईएल उस पेशेंट ने सिलेक्ट किया था, एंड बायोमेट्री हो गई थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, chapter perfectly planned tha, and then the IL was planned for that patient for the next day. And previous night this surgeon noticed that this particular patient is one-eyed, and the IL he has selected it does not suit that patient. वो पेशेंट बहुत ज्यादा अफोर्डिंग नहीं था, लेकिन वन आइड होने के बावजूद उन्होंने जो आयल सिलेक्ट किया था, ही थॉट दैट उनको इस पर्टिकुलर आयल से बेहतर दूसरे पर्टिकुलर आयल से ज्यादा फायदा होगा। ऑफ कोर्स बीइंग इन पेरिफेरल प्रैक्टिस उनके पास आयल का स्टॉक रहता है, जैसे कि मेट्रोज में आयल ऑर्डर कीजिए और ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस आयल आता है, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन पेरिफेरल प्रैक्टिस में नॉर्मली स्टॉक्स रहता है। तो रात में उन्होंने अपने ओटी वाले से पूछा, दे हैड वन मोर गुड हैबिट कि ओटी वाले के पास रोज के आयल के स्टॉक का फोटो रहता था। एवरी डे बिफोर लिविंग द ओटी पर्सन विल क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ द होल स्टॉक इन द कबर्ड एंड ही विल हैव दैट विथ हिम। तो रात में उन्होंने लगभग आई डोंट नो व्हाट टाइम, 10 रहेंगे, 11 रहेंगे, 12 रहेंगे, जो भी टाइम रहेगा, फोन करके उसके लिए इंपोर्टेड आयल मोबिलाइज करवाया मतलब चेक करवाया कि वो है या नहीं है। नेक्स्ट डे जब पेशेंट आया तो पेशेंट के लिए वो आयल करवाया गया, एंड सिंपली पेशेंट को भी बताया नहीं गया कि हमने आपको बेटर आयल किया है। आई यूज्ड टू आई हैपन टू बी देयर द नेक्स्ट डे से मेरी विजिट वहां पे थी, और मैं जस्ट ओटी के बाहर घूम रहा था, और ओटी लिस्ट मैंने देखी, उनके लिए XYZ आईएल प्लांट था, और बाहर काउंसलर पेपर वर्क कर रहे थे, और उन्होंने स्टिकर लगवाया अल्कॉन, मतलब इंपोर्टेड आईएल का। मैंने बोला ये गलती हुई है या पर्पसली किया गया है, व्हाट इज द कॉज? काउंसलर सेड सर आई डोंट नो, अंदर से ये बॉक्स आया है कि इनके लिए ये आयल यूज किया गया। मैं बोला आर यू चार्जिंग दैट पेशेंट? नहीं, हमें ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ठीक है, मैं बोला उसको जाने दिया। सो दैट डे ओवर द डिनर आई आस्क्ड डॉक्टर साहब कि सर ये ऐसा ऐसा पेशेंट ड्यूरिंग, यस आई डेफिनेटली रिमेम्बर, कल रात को हम लोगों ने आधा घंटा उसके पीछे इन्वेस्ट किया है कि इसके लिए कौन सा आयल बेटर है, उसके लिए आयल अवेलेबल है या नहीं है। सी दिस इज वेरी स्मॉल थिंग, बट नॉट एवरी प्रैक्टिस डज दैट, दैट इज देयर यूएसपी। ये एग्जाम्पल आपको मैंने क्यों दिया? कोई भी छोटी सी प्रोसेस अगर आप अपने प्रैक्टिस में कर रहे हो तो वो आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि आपके शहर में या फिर आपके स्टेट में, आपके कंट्री में नॉट एवरीबडी डज दैट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो
ऐसे आपको अपनी यूएसपीज फाइंड आउट करनी है। और जैसे कि मैंने बताया, ये यूएसपीज फाइंड आउट करके आपको हर एक पेशेंट को वो यूएसपीज नहीं, मैंने आपको तरकश और बाण का एग्जांपल दिया ना, यू डोंट हैव टू शूट एवरी यूएसपी एट एवरी पेशेंट, ईच पेशेंट। आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके राइट अपॉर्चुनिटी पे राइट यूएसपी आपके पेशेंट के सामने प्रोजेक्ट करनी है। एक्सपीरियंस ऑफ योर कंसल्टेंट और सर्जन इज योर यूएसपी, राइट। और अगर आपके डॉक्टर साहब एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशंस करते हैं, या फिर पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, या फिर अगर इंस्ट्रक्शन कोर्सेस कंडक्ट करते हैं, तो दैट इज योर यूएसपी बिकॉज ही इज एकेडमिकली स्ट्रांग। ये सारी चीजें, एक छोटी सी और कॉमन बात बताता हूं आपको। आई डोंट नो बाकी स्टेट्स में ये होता है नहीं होता है, स्पेशली महाराष्ट्र में पेरिफेरल प्रैक्टिसेस में अगर आपके डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंस के लिए भी गए हैं, तो आपका स्टाफ बोलता है डॉक्टर नहीं, आज डॉक्टर साहब नहीं है, गांव गए। ओके, सो यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट योर डॉक्टर। देयर इज नो हार्म, और रादर यू शुड प्रोजेक्ट कि नहीं, डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं, या फिर डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं। आपका ये छोटा सा कम्युनिकेशन इमीडिएटली डॉक्टर साहब का पोजिशनिंग करता है, ब्रांडिंग करता है कि अच्छा डॉक्टर साहब मुंबई गए हैं प्रेजेंटेशन, दिल्ली गए प्रेजेंटेशन के लिए। बट देन यूजुअली आई हैव सीन एट वेरियस प्लेसेस, स्पेशली इन महाराष्ट्र, ते गेले नाही डॉक्टर गावाला गेले, मतलब डॉक्टर गांव गए। वहां गांव गए, वो गए मुंबई, मुंबई गांव है, वो गए दिल्ली। Sir, I will intervene. I'm attending this meeting, taking a leave from my evening clinic and telling that I have gone somewhere. So I agree. Make this mistake. Yes, you are adding value. You are not adding value only to yourself. You are adding value to patient. फॉर एग्जाम्पल, ये मीटिंग्स 12 सेशंस अटेंड करके, जैसे कई लोगों ने एग्जाम्पल उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम लोगों ने ये अलग से चीज करना शुरू की है, किसको हेल्प हो रही है, किसको फायदा हो रहा है, अल्टीमेटली आपके पेशेंट को फायदा हो रहा है। सो देयर इज नो हार्म इन प्रोजेक्टिंग दैट कि हम लोग आपके बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें करते हैं। दैट इज यूएसपी, दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट। लेकिन हम लोग ये बताने में, आई डोंट नो, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग हिचकिचाते हैं, we simply hesitate. I don't know, but then we have to find out opportunity to project these things. Another example of unique selling point, आपको मैं हेल्प कर रहा हूं कि आप अपने प्रैक्टिस के यूएसपीज कैसे फाइंड आउट या फिर लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सिंपल चीज, कई प्रैक्टिसेस में मैंने देखा है, एंड दैट इज वेरी गुड हैबिट, अगर आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्पेशली जो डॉक्टर्स है, नॉट इवन डॉक्टर्स, जो काउंसलर्स है, यू कैन सजेस्ट योर डॉक्टर्स। कई प्रैक्टिसेस में देखा है कि सुबह ज्वाइनिंग टाइम पे, स्पेशली ओटी में जब पूरा स्टाफ आता है, ओटी का पूरा स्टाफ आ गया सुबह, लेट अस से 7:30 इज योर रिपोर्टिंग टाइम, 7:30, 35 जो भी 5-10 मिनट आगे पीछे, पूरा स्टाफ आने के बाद दे हैव अ ब्रीफिंग मीटिंग ऑफ 2 मिनट्स और 3 मिनट्स। डॉक्टर साहब खुद रहेंगे या फिर ओटी इंचार्ज रहेगी, वो कंडक्ट करेगी आपकी ओटी की ब्रीफिंग मीटिंग। ओपीडी में बहुत कम जगह पे देखा है, हालांकि 1-2 जगह पे हम लोगों ने आई वोंट लाई, हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ओटी के लोग जो है वो थोड़े ज्यादा पंक्चुअल रहते हैं, क्योंकि ओटी वक्त पे शुरू करनी होती है, लेकिन ओपीडी के लोग उनका डिले टाइम कभी कभी 15 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट्स भी हो जाता है। तो वो चीज ओपीडी के बारे में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। But then if you are conducting a briefing meeting, it's a small process of your hospital. But then OT के समय आपका स्टाफ अगर ऐसी कुछ ब्रीफिंग मीटिंग, या फिर जिसे हम लोग डीब्रीफिंग मीटिंग भी कह सकते हैं, वो अगर कंडक्ट कर रहे हैं, और जस्ट इमेजिन अ पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ काउंसलर, एंड देन पेशेंट को कुछ क्वेरीज है अबाउट द एक्सपीरियंस ऑन द डे ऑफ सर्जरी,
कि नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मैं आऊंगा तब कैसे रहेगा, क्या रहेगा। सर डोंट वरी, हम लोग सुबह, आपको हम लोगों ने 8 बजे बुलाया है, सुबह 7:30 बजे हमारे ओटी डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, और कल जो कि 8-10 जो भी केसेस प्लान्ड है, उस हर एक केस के बारे में डिस्कशन होता है, आपके बारे में भी डिस्कशन होगा। आपकी ये जो क्वेरी है या फिर आपकी ये जो समस्या है वो मैंने आपके पेपर पे लिख ली है, तो सुबह के ओटी के स्टाफ के मीटिंग में ये चीज डिस्कस होगी। दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट, बट देन अगेन इट्स योर यूएसपी। आपके पेशेंट को पैसिफाई करने के लिए आपने अपनी प्रोसेस को यूएसपी करके इस्तेमाल किया, एंड देन दैट गोज डीप इनटू हिज माइंड, नो दिस सेंटर इज टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ मी। अल्टीमेटली मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको एक्सपीरियंस डिजाइन करना है या फिर आपको पेशेंट के एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है, तो ये सारी चीजें मिलके पेशेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस बनता है। Not just that 15 minutes of talk that you give into your counseling chamber, that is not whole about counseling. मैंने और एक कंसेप्ट आपको बताई थी, one point contact, OPC. You have to become OPC for the patient of your particular center. तो ये OPC सिर्फ वो 15 मिनट के लिए नहीं होता है. This OPC is for the whole experience, right from your first encounter with that patient till even post-op visits. ड्यूरिंग पोस्ट-op विजिट्स वो पेशेंट को लगना चाहिए, आप लोगों में से मैंने कई बार देखा है, काउंसलर्स को पर्सनली आके मिलके जाते हैं पेशेंट्स, उतना अच्छा रैपो बिल्ड होता है। दैट इज नथिंग बट 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। लेकिन हम लोग फील गुड फैक्टर में रहते हैं। वी फील गुड, अरे वो पेशेंट आया, खुद से आया। कई बार पेशेंट मिठाई लेके आते हैं, कई बार कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, या फिर सिंपली जस्ट थैंक यू बोल के जाते हैं। वी जस्ट वी रिमेन इन दैट फील गुड फैक्टर, वाओ पेशेंट मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। नो, यू वर्क ऑन दैट, यू वर्क मोर ऑन दैट, कि अगर आप में वो चीज है कि पेशेंट आपसे खुद से आके बात कर रहे हैं, थैंक यू बोल के जा रहे हैं, हाउ यू कैन वर्क मोर ऑन दैट क्वालिटी ऑफ योर्स। दैट इज नथिंग बट OPC, 1 point contact. That can turn into your USP. कि कुछ भी हो इस सेंटर में, मुझे कुछ भी अगर डाउट है, पूछना है, तो मैं ये पर्टिकुलर लेडी से या फिर ये पर्टिकुलर जेंटलमैन से बात करूंगा, उतना कॉन्फिडेंस मुझे आना चाहिए एज अ पेशेंट। दैट इज नथिंग बट योर USP, राइट? सो ऐसी कई सारी एग्जांपल्स है जिससे हम लोग USPs बोल सकते हैं। डॉक्टर सोनिया ने मुझे मैसेज किया था कि नो USP. So I hope now you are trying to figure out your USPs, right? Yes, yes. ऐसी कई सारी चीजें अपने प्रैक्टिस में रहते हैं। So now I want you people, I open the forum and then I have just given, मैं क्या बोलते, कीड़ा छोड़ दिया है आपके दिमाग में। So now you have to come up with your USPs. You think, because this is a brainstorming session. That is why I said no PPT. I want you people to come up with the USPs. कि क्या लगता है आपको कि यस, हमारे प्रैक्टिस में हम लोग ये चीज अलग से करते हैं। और जो लोग अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, प्लीज ऑन बोर्ड आ जाइए। At my center, whenever we do a cataract surgery on a child, irrespective of the cost they pay, we always implant hydrophobic import like thickness or accuracy of IQ, hydrophobic, irrespective of the cost they pay, because Okay. that is for lifelong. So we don't compromise according to the cost. We give them options, but we always implant a good thickness. But do you tell that? No, not at all. Yeah. See, if you are doing that as an exception, then I personally feel कि आपको पेशेंट को बताना चाहिए कि आपके भले के लिए दिस इज व्हाट वी हैव डन, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। हम लोगों को यूजुअली लगता है कि नाउ पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, एवरीबॉडी विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट, बट इट रियली डज नॉट वर्क दैट वे। अगर आप पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे, मैंने नॉर्मली देखा है कि जो प्रैक्टिसेस ये चीज करती है कि फॉर पेशेंट्स बेनिफिट, आपने पेशेंट को
अपर पैकेज का लेंस इम्प्लांट किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी हैव टू बिकॉज ऑफ द इंट्रॉप थिंग वी हैव टू इम्प्लांट द लोअर पैकेज IOL। तो उस वक्त भी अगर आप उतने ही ट्रांसपेरेंटली पेशेंट को बताएंगे and then you charge that patient less. See, when you are implanting the superior IOL, you don't charge. But then when you are implanting the lower package IOL, I won't call it as inferior, but a lower package IOL, you reduce the charges. अगर वो ट्रांसपेरेंसी अगर आपकी प्रैक्टिस मेंटेन करती है, then that transparency is nothing but your USP, and then that you do not have to promote. That is something that has to be experienced. और ये पेशेंट टू पेशेंट ये एक्सपीरियंस फैलता है कि नहीं, आप ट्रांसपेरेंटली अपना काम कर रहे हो, वो मार्केट में अपने आप फैलता है। दैट creates awareness in the market. Second thing we do, there's a surrounding area of village, like the people are quite poor. So at times a young person comes up and opts for, we have an SICS package of 8,000. So they opt for that package when they cannot afford. But yes, we still go, we take 8,000, but we do a phaco and we implant a hydrophobic lens. Not thickness, but yes, a basic hydrophobic, Indian hydrophobic lens. So that the vision and the quality is good for that young person. That is what we, that at times we tell, at times we don't. It is both ways. That is at your discretion. I mean, if you find that person can understand, and then it's very important for us to explain it to that patient. You have all rights. I mean, you should do that. Anybody else? और कुछ USP शेयर करना चाहेंगे? Yes, Dr. Varsha. USPs of your practice. Sir, good evening, sir. Good evening. I'm Manjula from Zamindar Eye Center. Yeah. Bangalore. Sir, we do lab investigation as a complementary, sir. Even for a diabetic and the non-diabetic. For a diabetic, we does like fasting, postprandial, then urine routine, as well as the ECG, sir. So where like non-diabetic, we does random blood sugar, then urine routine and ECG prior to the surgery for all the patients for the cataract surgery. Right. Okay. And one more thing, like for see almost this cataract, it's for all like elderly patient. We serve for all the patient, for cataract patient, we serve like tea, coffee, buttermilk. So all these things, because they will be more comfortable, because diabetic patients, they wait for such a long time, all those things. Very good. That's a nice gesture. Just a small suggestion from my end. Yes, sir. When you say compliment, okay, that does not have any monetary value. When I hear compliment, मतलब free मिल रहा है मुझे, correct? Yes, Instead of that, if while projecting, if you start saying कि ये पैकेज है, इसमें आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और लैब इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें included है. So that is what I was trying to tell in second or third session. Value addition. मैं समझिए 15,000 20,000 I am paying for a cataract surgery, but then in that package I am getting 1 2 3 4 all these things. These all things are value added services. So that is adding value to your package. Okay, like at our place, our package is all inclusive. Okay. Usme we have included even medicines. Okay. And the consumables. I know, I mean, practice to practice it varies. कई practices में हम लोग medicine kit या फिर medical kit prescribe करते हैं. There is no harm in doing that. But then we have crafted our USP like this. And then the way we project कि ये package है, आप 15,000 वाला कीजिए या 80,000 वाला कीजिए. इसमें क्या चीज क्या what all things are included? इसमें lens की price included है, surgeon fees included है. Hospital and OT charges, all charges are included in this. Whatever we use during operation, आप हमें मेडिकल से ग्लव्स लाके दीजिए, प्लास्टिक लाके दीजिए, सुई लाके दीजिए, सिरिंज लाके, ये हम आपको कुछ नहीं बताते. Everything is included in this.
पोस्ट ऑपरेटिवली जो बेसिक 2 तरह के ड्रॉप्स और 2 तरह की टैबलेट्स होती है वो भी इसी पैकेज में इंक्लूडेड है, यहाँ से ही दिया जाता है। एनेस्थेटिस्ट जो स्टैंड बाय आते हैं उनके चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। पोस्ट ऑपरेटिवली आपको 3 बार फॉलोअप के लिए आना होता है, तो फॉलोअप के चार्जेस भी इसमें इंक्लूडेड है। वी डू नॉट से कि वो फॉलोअप आपके लिए फ्री होता है, नो, दैट फॉलोअप चार्जेस, दोस फॉलोअप चार्जेस आर इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। इतनी सारी 5, 6, 7 चीजें मुझे मिल रही है। So, as a patient, you feel yes, it's an all-inclusive package. So it's up to you. See, follow-up, most of us do not charge, correct? But then we do not take opportunity to project that. कि ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। हम लोग बिल ब्रेकअप देते हैं, बिल ब्रेकअप में हम लोग ये चीज देते हैं। few centers might be charging standby charges, as an additional. You have to find out. आपके मेरे प्रैक्टिस में हम लोग ये चीज कर रहे हैं, तो आई हैव ऑल राइट्स टू प्रोजेक्ट दैट एंड देन आई एम डूइंग दैट, करेक्ट? एट द सेम टाइम मैं ये पेशेंट को अवेयर करवा रहा हूँ या फिर रियलाइज करवा रहा हूँ कि आपको मैं मेडिकल से सुई लाइए, सिरिंज लाइए, प्लास्टिक लाइए, ग्लव्स लाइए, ये मैं आपको कुछ नहीं बोलता हूँ। एवरी पेशेंट इज टोल्ड दिस थिंग। सो वो उसके दिमाग में जाता है कि ये, हाँ, कई बार हम लोग बाकी अस्पताल में जाते हैं तो ये सारी चीजें, और पेशेंट कई बार ये लेके आता है, ठीक है, ये तो आपने खर्चा बताया, इसके ऊपर क्या खर्चा होगा, करेक्ट? देन वी ट्रांसपेरेंटली टेल पेशेंट कि इसके अलावा आपका क्या खर्चा होगा, सो दैट यू कैन टेक अ कॉल। जैसे कि आज आप कंसल्टेशन के लिए आए, आज की कंसल्टिंग फी आप आज देके जाओगे, राइट? सो ही इज मेड अवेयर दैट यस, दैट ही इज पेइंग टुडे। आपको जो लेंस डलवाना है उसका हमें स्कैन करना होता है, तो उस स्कैन जिस दिन होगा उस दिन एक आंख का इतना खर्चा उस दिन आपको पे करनी है, उतनी फीस। कई प्रैक्टिसेस, लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस इंक्लूड बायोमेट्री इन द पैकेज, बट दे डू नॉट प्रोजेक्ट। नो, यू प्रोजेक्ट कि वो स्कैन जो होता है वो इसमें इंक्लूडेड, एंड यू अटैच सम वैल्यू टू दैट, कि वो स्कैन जिसकी वैल्यू 1000 रुपए है, वो 1000 रुपए का स्कैन इस पैकेज में इंक्लूडेड है। सो इमीडिएटली वैल्यू एडिशन हो जाता है। वी डू नॉट इंक्लूड, वी एक्सक्लूड। सो वी टेल देम ट्रांसपेरेंटली कि ये आपका अलग से खर्चा होगा। देन आपको ये सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी करवानी है, आप बाहर से कहीं से भी करवाइए, वो एज पर एक्चुअल जो आपका खर्चा होगा। देन व्हाइल टेलिंग, दीज आर स्मॉल जेस्चर्स, एज पर बाहर जो भी आपका खर्चा हो, यू आर सेइंग माय हैंड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम शेयरिंग ऑफ, कि वो आप अपने लिए कर रहे हो, तो आप जहां से भी करवाते हो, आपका जो भी एज पर एक्चुअल्स होगा वो होगा। देन पेशेंट इमीडिएटली एक्सेप्ट्स कि यस, दैट इज माय, दैट आई एम डूइंग इट फॉर माय ओन थिंग, so that I will have to bear. And as an exception, अगर पोस्ट ऑपरेटिवली अगर कुछ रिएक्शन रह गई या फिर स्वेलिंग रह गई, तो एक आध दूसरा ड्रॉप डॉक्टर अलग से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हर एक के लिए नहीं लगता है। That much you will have to buy from medical. What I'm doing is I am transparently putting the whole expected expenses in front of patient. तो वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि मुझे इतने तक खर्चा आएगा। That is my USP. But I am not projecting that as USP. I am making patient experience the whole process, which is my USP. You're getting my point? So my suggestion to you would be, you start projecting that. This is included in the package. You attach some value to that. Normally बाहर लैब इन्वेस्टिगेशंस के कितना खर्चा होता है, तो इतने खर्चे की जो इन्वेस्टिगेशंस है ये पैकेज में इंक्लूडेड है, राइट? एंड देन कॉफी एंड टी एंड बटर मिल्क, दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड. सो आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दैट सम टाइम, Sir, and also I just want to tell one more thing. Like, we take testimonial videos from the patient. Those are happy patient. Yeah. And top on that, we make an artwork on that videos, that thing. Yeah. So yeah. So where are you using those videos? So we are displaying that, sir. Those Wonderful. are happy.
Yeah, Wonderful. because Wonderful. because diabetic patients, there will be in waiting area, so we put this testimonial video, so even they will experience what actually they have experienced. Correct. Correct. Wonderful. So I'll be coming to that part in the counseling material. जो अपना next part है. So what all material we can use as a counseling tool. That's a wonderful thing that you are already doing. So we'll be discussing that in detail during our next part. Thank you. I have a question. Like you told ki we can add these lab reports into the package, but for me, we do ki it is an extra, but at times patient asks for a discount or some sort of concession. So instead of giving a discount, we offer these lab tests as free. Is that the right way to go? So we say कि okay इसमें डिस्काउंट तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम आपकी लैब टेस्ट फ्री करवा दे रहे हैं जो हमारे पास हैं. So that is the way we give discount. See, I mean, हर एक प्रैक्टिस की अपनी अपनी वे होता है टैकल करने का. Every practice has got this discount asking patients. So that is what you are doing. So I won't touch upon that whether you are doing it right or wrong. But then जैसे आप बोल रहे हो कि हम आपकी ये फ्री करवाते हैं, तो just change your communication like ठीक है आपकी लैब रिपोर्ट जो है इसमें इंक्लूड करवाते हैं. Okay. So okay, that not to use the free word, but yes, use alternative words. ठीक है, हम आपके लैब रिपोर्ट्स भी इसी पैकेज में इंक्लूड करवा देते हैं. So he gets that feeling that yes, he is getting. See, value addition is what? I have to get something extra. I'm getting something extra in this value. That is value addition. But value addition कई बार जो होता है वो जो सामने वाला प्रोजेक्ट करता है उसके ऊपर होता है. Like if you say this is free, that is not value addition. Just a small tweak. Did I share my experience of value addition? I don't know. I mean, मैं इतने सेशंस लेता हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे मैंने कौन सा एक्सपीरियंस शेयर किया. एक्सपीरियंस ऑफ माय व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट कार. Did I share? Yes, you have shared, sir. Yeah. So that wonderful, that poor lady. कंपनी ने इतना सारा खर्चा किया था, but she didn't, she was unable to add value to that. Though I was happy to receive all those things, but the overall experience was not, pleasant. Okay. Anybody else? Yes, I have a question. Yes, ma'am. Ours is a 3-tier city. So, and we are an ABH accredited. So we train our staff in all the codes and all those things, which is not seen in other hospitals of our city. But that sort of thing, how can we, convey that to that value addition the patients don't see and they don't appreciate, obviously, because you don't encounter those situations that we are trained or our staff is trained in that way. ये चीज कैसे हम इस USP को हम कैसे कर सकते हैं? Because बाकी शहर में कोई नहीं अपने staff को उस तरह से train करता है जैसे हम करते हैं. Very good. There are two parts, two aspects to this. Number one, आप अगर स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. If that is reflecting, so your patient is already experiencing that thing कि this staff is well trained, well behaved. Okay, so वो आपका जो USP है, the patient is already experiencing. Number one. Number two, रही बात प्रोजेक्शन की, कई बार I suggest practices those who have those who do not have space crunch. तो एक ऐसा स्पेस रखिए जहां पे you project the activities of your hospital. Anything, it could be a pin-up board, small pin-up board जो आप स्टाफ के लिए नोटिस लगवाते हैं, ठीक है. तो you can display photographs of such session on this notice board, because during waiting time patient has nothing to do. तो वो ये सारी चीजें ये इनमें स्टोरी लाइंस रहती है कि कुछ एक्टिविटी करते हुए फोटोग्राफ है, तो सिंपली पेशेंट जाके वो देखेगा. So that is conveyed. This everything need not be talked and verbally conveyed. So these certain things we have to convey visually.
or maybe you can, you can prepare a small video and then you can display it on your LCD, waiting room LCD, or you can circulate it through your patient's WhatsApp group. There are numerous platforms which you can utilize. You can put it on your social media platform, Facebook पे डालिए आप. तो ये सारी चीजें कई बार help करती है. And then that's what I'm saying. If you're doing, many of us keep on doing various things, but we miss to project those things. और ये patient के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है. When I am evaluating your practice, whether this practice is really suitable for me or not, when I am evaluating that practice, patient ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को importance देता है. So that's a wonderful thing that you are doing. And a simple thing, आप photographs display कीजिए. अगर आपका training calendar है, you can display that calendar. That will serve two purposes. One thing is that is a notice for your staff members. And number two is your patient is seeing इतनी सारी trainings इनके staff की ली जाती है. No wonder why I am seeing their staff well behaved, provided they are reproducing your training. They do reproduce, but I'm sure there must be. Yeah. Fortunately, those situations, emergency situations, don't come up that often. Yeah. जब आते हैं तो अच्छा response मिलता है, no doubt. Correct. Thank you. Your suggestions Sir, are definitely. Thank you. Yes. This USP can be area specific, It can be. because last week I have seen 2 patients rejected by nearby 2 hospitals because they didn't have backup from a ICU team or anesthetist. Yeah. Just now I am seeing a patient with 30% heart failure, 30% heart function remaining, and one hospital from nearby area said that we can't operate. But I'm working in a multi-speciality hospital with a ICU and critical care team and anesthetist and everything. So that can be my USP? It is USP. It can be nahi. It is your USP. Right? Because see, certain things which nobody else is able to offer, you are offering. And then see, this USP, number one, whenever you are doing such thing, you have opportunity to project that. लेकिन हम लोग बार बार वही चीज, जैसे कि आपने समझिए किसी पेशेंट को ऑपरेट किया, आप प्रोजेक्ट कीजिए. जैसे अपने पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट कीजिए, इन हाउस डिस्प्ले कीजिए, ओके, उस पेशेंट का टेस्टिमोनियल लेके वो डिस्प्ले कीजिए. बट देन ठीक है, वो उस समय हो जाता है, और उस समय जितना ऑडियंस आपने कैप्चर किया उन तक वो पहुंच गया. बट व्हाइल काउंसलिंग, when I'm saying कि आपको एक यूएसपी आपके तर्कश में तैयार रखना है, तो while counseling if you come across, जैसे हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में देखा और इंटरैक्टिव काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस देखा, you are gathering information, you are boiling down to a specific concern. If you are coming across specific concern कि नहीं, ये पेशेंट को ये चीज दिमाग में खाए जा रही है, you immediately pick up that USP. Don't worry sir, अभी 2 महीने पहले ऐसा एक ऑपरेशन अपने पास हुआ था, and then that was wonderfully done. That patient was sent back by at least 2 or 3 hospitals, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी. लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी होने के, I can share that video with you. See, you have answered his concern. So what I'm saying is, ये USPs ठीक है, एक प्रोजेक्शन एक चीज हो गई, but then repeatedly using those USPs, you have to be equipped with those USPs all the time. Okay. I'll share one example, like area specific excellent example. हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे ऑफ्थेल्म सेटअप में जीए या फिर शॉर्ट जीए की फैसिलिटी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. And then our pediatric Ophthall surgeon had to operate, I think 1.5 or 2 years kid. And that was the first time such surgery. I mean, it was a squint surgery. Squint surgery was not happening for the first time in the city, but under full GA, that was happening for the first time. So that is opportunity. We have backup.
we have set up, our anesthetist is competent and confident. तो उस टाइम हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट की, so that got wonderful response. That is our USP. And every time when parents are coming, नहीं ये इतने छोटे उम्र में हो सकता है, we are taking that opportunity to share. हम लोग चाहिए तो आपको उनका नंबर शेयर करते हैं. You talk to those parents because those parents were so overwhelmed that कि ये हो सकता है. Yes, and ये हुआ. Okay. So you have all rights to use that as USP. Thank you. Welcome. Anybody else? Yes, Ms. Swati. I have a question. Yeah, so basically, is there any way to project that the staff is very empathetic? Like we are empathetic, you experience that, but is there any way to project that? No, see, these are your, what I would say, these are your qualities, the staff's quality. And the quality has to be experienced. Yeah. Correct? Yeah. Okay. The quality has to be experienced. One thing many practices do, and many practices do not do, there is something called staff of the month, or member of the month, or star of the month, something like that. Yeah. तो ऐसी कुछ चीजें आप शुरू कर सकते हैं, and then you can project that staff as she or he was star of the month, let us say star of March 23, and उसका फोटो डॉक्टर साहब से वो ट्रॉफी गिफ्ट जो कुछ भी है बैज लेते हुए, and then you can write couple of sentences about that staff, so for displaying 1 2 3 4 qualities. So these are the ways you can display. Okay, but then वो staff पे बहुत ज्यादा responsibility आती है, क्योंकि अगर as a patient I am sitting in your waiting room and I see okay, March 23 star of the month Miss Swati Mehra, so मेरी आंखें हमेशा आपके ऊपर रहती है. Why she was star of the month, what exactly differently she is doing. तो आप पे responsibility ज्यादा आती है, but that is good in a way, because the whole staff starts working in that direction. But empathy, as you said, empathy has to be experienced at each point, basically. Okay. And then if you are really empathetic, you will not miss a single opportunity. Like, as I said, you remember that patient's incidents who had to walk. Walk, yeah, I remember. So if everybody is empathetic, somebody would catch that thing. Yes. Yes. Right. Anybody else? Sir, we send thank you message and as well as the birthday wishes, sir. Because we take all the details, so we'll be sending the thank you message for visiting to our hospital, as well as we will be sending the birthday wishes, sir. That's a wonderful gesture. That's a wonderful gesture, and that is your USP. Okay, that is your USP, because not everybody does that. But then obviously we cannot project. We cannot tell every patient, okay, we'll be sending you a thank you message and we'll be sending you birthday wishes. But then what you can do is, what I have usually seen is that becomes monotonous over the period. Okay, किसी एक के दिमाग में आया कि ये मैसेज भेजा जाना चाहिए, और वो बंदे ने अपने दिमाग से एक मैसेज फॉर्म करके दिया था, और वही मैसेज अगले 8 10 12 15 साल चल रहा है. Okay, see, the times are changing, generations are changing, so you can actually customize messages for different groups. Younger patients के लिए you can have a slight what I would say a friendly kind of a message. You can use smileys in that. What we are trying to do, हम लोग इससे क्या चीज achieve कर रहे हैं, we are trying to connect with the audience or with your patients, right? So अगर मुझे thank you very much for visiting our hospital, ये message, it gives me a good feeling. But then if the patient is a youngster, उसमें अगर कुछ smileys आते हैं या फिर thumbs आते हैं, तो immediately वो connect होता है. Correct? अगर elderly patient है, उनके लिए अगर उस तरह का कुछ मैसेज फॉर्म किया जाए, तो यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग इन योर यूएसपीज. ऐसा नहीं है कि ठीक है, लाइक मेरे एक प्रैक्टिस में
हम लोगों ने लगभग आई थिंक 17 साल पहले, you all must be aware of Infinity Vision System, correct? That is Alcon's phaco machine. 17 years back, that was something big. I mean, very, very unique. So that was unique selling point of that particular practice. So we said, yes, we take this opportunity. हम लोगों ने बड़ा फंक्शन किया था, हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया कि इस रीजन की this is first Infinity Vision System. That practice is from your region, Dr. Sandhya. It's from Jalgaon. So 17 years back we had that event done. तो हम लोगों ने सारे पेशेंट्स को उस समय व्हाट्सएप इतना शायद था ही नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट देन हम लोगों ने एक्चुअली लेटर्स लिखे. We printed letters, and then the practice had a database of patients' addresses. We sent across the letters, and we did a big event. ये यूएसपी प्रोजेक्ट हो गई, उसका जो कुछ भी बैंक था हो गया. उसके 3-4 महीने बाद तक पेशेंट्स वो लेटर लेके आते थे. The Infinity Vision System itself was a USP, but then this gesture of your doctor sending a letter कि मेरे डॉक्टर ने मुझे खत लिखा है, that itself gave a very good feel in the market. और 3-4 महीने तक पेशेंट्स एक्चुअली वो लेटर आते रहे. When I was visiting, I think 3 months or 4 months down the line, एक पेशेंट आया था और उन्होंने बोला कि ये आपका लेटर पढ़ा, आपके पास कोई बड़ी मशीन आई है, ऐसा सुना मैंने, ये मेरा पोता है, बार बार हेडेक की कंप्लेंट कर रहा है, देखिए आपके मशीन से कुछ हो सकता है. It was Infinity Vision System, but then patient has got nothing to do with these jargon of words. Infinity Vision System, efficient, ये वो, उसके दिमाग में ब्रांडिंग हो गया कि yes, this practice is something unique. This practice has got something unique. So that is how you project. But now 17 years down the line, I cannot keep on projecting Infinity Vision System, right? As I evolve, I have to evolve. अभी वो सिटी में 5 Infinity आई, इन्होंने Centurion लिया, then you start projecting Centurion, but then it has an end. So as I am saying again and again, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूएसपीस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए. Your processes and systems have to be your unique selling points, right? Yes. So good evening. Yeah. My name is Reena from Zamindar's Eye Center, sir. I cannot see you, Reena. Are you there? Yeah. Sophia Reena. Sorry. Yeah. So I'm from Zamindar's Eye Center, Bangalore itself. We also do one more thing after the surgery each day. It means every day, each day of the surgery, evening, that is maybe around 6 o'clock, 7 o'clock like that. One of our staff, OT staff, will call all the surgery patients of that particular day and ask the patient how they are. Are they putting the medicines on time or no? Is there any doubt? Is there any pain? Or is there they need any help or what? So we do it in this way also, sir. That's very good thing. That's your USP. That's your USP. But then that has to be what I would say, that has to be experienced by the patient. Yes. And the next day when the patient comes, they say, ma'am, yesterday my mother had severe pain. We didn't know what to do. And thank God, like one of your staff, they called us and they spoke to me and it was really good. And we were able to come out of it. And this happened. And also, we have this free time like of the post-op, three times of the post-op. Sometimes what happens is patients, they miss out. Coming, they forget or they will be busy with something else. So we also call the patient and remind them, sir, this is your post-op time, you'll have to come. Please don't miss. We do it for each and every patient when they miss out. We keep a track of each and every patient, whether they have come or no for the post-op. That's very good. That's very good system. And that's very good thing that you are doing. Please continue doing that. The only thing is, for others, those who are not doing and those who intend to start this thing, हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि we start this system
कि अपने पेशेंट को अच्छा लगेगा, बट बिफोर यू स्टार्ट द सिस्टम मेक श्योर दैट योर स्टाफ इज वेल ट्रेन्ड फॉर आंसरिंग द क्वेरीज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हैज गॉट सम इरिटेशन, पेशेंट हैज गॉट सर्टेन डाउट्स, and then if that those doubts are not cleared really by a knowledgeable person, so that may backfire also. ठीक है, तो पेशेंट कई बार क्या है, बहुत सारी कंप्लेंट शुरू कर देता है, बिकॉज नॉट एवरी पेशेंट इज सेम कि ठीक है अच्छा है, या फिर स्पेशली जहाँ पे टॉपिकल नहीं होता है, ब्लॉक दिया जाता है, सो as the effect of block is fading out, so they start experiencing pain. So these are common situations. So the person or the caller has to be trained thoroughly to answer different kind of situations, and the whole purpose उसे पता होना चाहिए कि हमें ये पेशेंट को अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं हम लोग, so that the patient actually takes this as again value added service, not just a complaint box, right? Yes sir. सर एक बात पूछनी थी जी। मैं फरांदे हॉस्पिटल पुणे से मैंने ज्वाइन किया है, मेरा नाम पाटिल है, मैं टीपीए कोऑर्डिनेटर हूँ और काउंसलिंग भी करती हूँ। जस्ट एक पूछना था कि हम पेशेंट से फीडबैक कैसे ले सकते हैं, मतलब उनका अगर आपने जैसे बोला कि उनका एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो या मीडिया से आप ये कर सकते हो, तो वो कैसे मांगे पेशेंट को, मतलब कुछ को पेशेंट को पसंद नहीं आता है ना बताना। I'm coming to that. We are already 7:10, so we will start with our second part, that is counseling material, और फीडबैक जो है या फिर पेशेंट टेस्टिमोनियल जो है, दैट इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल दैट योर प्रैक्टिस हैज। तो वो कैसे मांगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कैसे यूटिलाइज करें, राइट? बिकॉज आई थिंक समबडी शेयर्ड रिसेंटली, अभी एक 15 मिनट पहले, कि दे आर कलेक्टिंग फीडबैक्स and they are displaying on the LCD TV. That is one way of utilizing those feedbacks, but then there are other ways also. So I'll come to that, and if I forget, then I usually don't tend to forget, but if I forget, just remind me. And I think Dr. Talwar, आप अपना एक कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन था जो हम लोगों को कवर करना था। One thing that I do is that we strictly follow a checklist system whenever we do the pre-op evaluation or everything. We just even before the surgery, we follow a checklist system. So as we work through, and I found it actually saves us many times from committing many mistakes or forgetting many things. Correct. So we do that as a system, but it is like something like the back end, like Madam had talked about her code which she implements in the hospital. Yeah. So it's like in the back end, but we know it makes a big difference to the patient care and to avoiding mistakes and things like that. So is that a USP? See, your patient, yes, that is USP. Certainly that's a USP. Let it be visible to your patient who's experiencing that. Okay, because it looks good. When I am seeing that the practice is so systematic that they are cross-checking each and everything. Correct. So patients feel good. Okay, this hospital, it is a comprehensive feeling. Okay, it's not just cataract surgery or it's not just a treatment. It's a all-inclusive feeling. So this is very much part of it. What I was asking is, before starting the session, we were discussing something, and then I said I'll come back to you on this thing. What was that point? If patient says, Doctor Saab, आपको ही आप बताइए कि कौन सा package अच्छा है. That was the point. Yeah. So Dr. Talwar and me, we both need Chyawanprash. Dr. Sandhya is very good at that. No, actually, that was the question. I just wanted to ask you कि whenever we, as a doctor, I do counseling, or what happens, I practice in rural area. उनका language totally अलग होता है. I cannot talk in that language. Being an educated person or so, I cannot go to that core and talk in that language. So I don't know how to explain them those packages or whatever the extra thing is there in their language, in language which they will understand. That is one thing. That is the rural area problem. And one more thing is
हर एक पेशेंट का होता है, यू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, आपको पता है आपको जो करना है। आई कैन नॉट डायरेक्टली आस्क देम व्हाट इज योर बजट और व्हाट, मतलब आई indirectly try to ask you must have thought that I want to spend this and this amount on the ये, but ultimately they come to same thing. मैडम आप ही बताओ, आपको मालूम है, आप ही अच्छे से बता सकते हैं, हमको क्या समझता है, आप क्या डालने हो, क्या डालने वाले हो, या how to tackle this and how properly I can explain them that what is difference between all packages or what is the difference really. Yes. So that in their language or so that they understand. They don't understand medical language. Yeah, so we'll take out this question first, and then we will move on to the counseling material part. What Dr. Talwar asked me during our initial, casual discussion when everybody was just about to join, मैंने hold किया था वो question because I thought everybody will be benefited by this answer, and then most of us face such questions. कि डॉक्टर साहब आप ही बताइए, या फिर कई बार काउंसलर को भी पूछा जाता है, यू ओनली टेल विच इज बेस्ट फॉर मी. ओके, माय पर्सनल टेक ऑन दैट वुड बी यू डू नॉट डायरेक्ट टू एनी पर्टिकुलर पैकेज. ओके, as we discussed last time, we have to explain them all the buckets. You remember the buckets कि ये lower segment है या फिर bucket है. You do not call it as a lower for you to understand. This is a lower bucket, this is a medium bucket, this is a premium bucket. So you explain the buckets, and then you, while discussion, आपको judgment आ जाता है कि वो कहाँ पे, उसकी सुई कहाँ पे अटकी हुई है. So you explain that bucket in detail. उसके बाद में अगर वो पूछता है कि आप बताइए, all the packages are good, all the lenses are good, ठीक है, आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी पैकेज सिलेक्ट कीजिए, does not matter. मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है. जैसे जैसे आप पैकेज में ऊपर जाते हो, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग बेनिफिट्स. ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 15,000 वाली लेंस खराब है और ये 80,000 वाली बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है. ओके, व्हाट यू आर गेटिंग इज योर विजुअल बेनिफिट्स. करेक्ट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पैकेज. स्टिल इफ दैट पेशेंट इंसिस्ट्स कि नहीं फिर भी आप बताइए, देखिए यूजुअली जो है अपने यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट जो है वो ये रेंज में ऑपरेशंस करवाते हैं. यू गाइड देम टू अ पर्टिकुलर रेंज, नॉट अ पर्टिकुलर पैकेज. एंड दैट आल्सो, ये रेंज आपके लिए ठीक होगी, नो, डोंट पुट योर ओपिनियन. व्हाट वी आर डूइंग इज, यूजुअली हमारे यहाँ पे पेशेंट्स जो है वो ये रेंज में ऑपरेशन करवाते हैं, सो दैट एज अ पेशेंट मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं भाई, बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम लोग जो करते हैं मैं उसी पैकेज में जा रहा हूँ. यू नो, इट्स अ हर्ड मेंटालिटी, राइट? सो आई डोंट वांट टू बी अननेसेसरीली एक्सपेरिमेंटल अबाउट समथिंग. नहीं, बाकी सारे लोग ये करते हैं तो मुझे यही करना है. नो, पेशेंट वोंट डू दैट. सो दैट एक्ट्स ऑन हिज साइड कि नहीं ठीक है, मैक्सिमम पेशेंट्स जहां पे करवाते हैं तो वो अपने फिर मेंटल बजट के हिसाब से ही विल चूज वन ऑफ द पैकेजेस. As far as Dr. Sandhya's question is concerned, कि rural area में, see you will have to find out certain analogies जो आपके एरिया में काम करें. ठीक है, mobile analogy, as I think Dr. Sonia was saying, she has started using that. वो अभी mobile is common everywhere, so you can use that analogy for explaining them certain things. Which even our practices in rural, we are at Tehsil place, in Pune district. Most of our patients are from either small time traders or farmers. So and language जो आपने बताया, language problem again same यहाँ पे. But whenever I get opportunity, I see to it that I counsel, so that I also gather. So my experience with such patients. एंड ओवर द पीरियड हम लोगों ने अपनी काउंसलिंग कैसे इवॉल्व की है कि पेशेंट्स, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस दैट मे नॉट बी एप्ट फॉर ईच एंड एवरी प्रैक्टिस, बट देन यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन थिंग. यहाँ पे कैसे है ना, पूना नजदीक है तो पेशेंट को साइकोलॉजिकली या मेंटली ऐसा लगता है पूना में जो सर्विस मिलती है वो सबसे बेस्ट है. करेक्ट. तो दे आर ट्राइंग टू कंपेयर कि यस पूना.
पूना में जो मिलती है वो बेस्ट है. So first and foremost thing what I have to break is कि the same kind of service you are getting here, which you will get in Pune or Mumbai. So then वो सारी टेक्नोलॉजी एंड वो सारी चीजें पेशेंट को एक्सप्लेन करनी होती है. बट देन एज यू करेक्टली सेड, पेशेंट नंबर वन, पेशेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड नंबर टू, मेनी ऑफ द टाइम्स ही इज नॉट कीन आल्सो. करेक्ट. तो एंड पेशेंट फील्स कि ये क्या बड़ी बड़ी बातें बता रहा है. तो व्हाट वी हैव डिवाइस्ड इज कि ये जो टेक्नोलॉजी है, I am not uttering a word, single word about the brand name of the machine that I am having. I am not uttering. We are having infinity vision system. I am not uttering infinity vision system. वो farmer, poor farmer को infinity से कुछ लेना देना नहीं. Correct. I am not uttering बहुत efficient है, ये है, वो है, and then torsional है, फिर सुई यहाँ से वहाँ. He has got nothing to do with that. What he is, you remember last time slide. You don't push features, you push benefits, and that also in such a way कि पेशेंट को वो ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत खुशी हो रहा है. तो what we do is, see, इसमें अपने आंख में ऑपरेशन के दौरान जो हीट पैदा होती है वो कम से कम रहे, so that बाकी के जो पार्ट्स है उसकी सेफ्टी बरकरार रहे. ऑपरेशन के लिए लगने वाला समय, ऑपरेशन के बाद मिलने वाली रिकवरी, इन सारी चीजों का अच्छे से ख्याल इस टेक्नोलॉजी में रखा जाता है. पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एट हार्डली 8 to 10 places. That is my USP. I have all rights to project that, but then I am not boasting that. I am just making him aware. And immediately ये सारी चीजें बताने के बाद I'll just yeah. Immediately, so the flow is like अपने आंख में जो गर्मी पैदा होती है वो कम से कम रखते हैं, so that other parts are safer. Then during operation पेशेंट का एक्सपीरियंस, पोस्ट ऑपरेटिवली रिकवरी, पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत कम जगह पे है. ये चीजें आपको बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्स्ट पार्ट जो है मोतियां निकालने का, वो अच्छी तरह से अच्छे सर्जन से किया जाए. ये हॉस्पिटल का काम. आपके ऊपर क्या डिपेंडेंट है. जो दूसरा पार्ट है, जो लेंस आंख में डलवाते हैं, उसका चॉइस कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है. सो दैट आई हैव डाइवर्टेड हिम टू द लेंस व्हिच ही वांट्स टू हियर, बट देन आई हैव पुश्ड माय पॉइंट्स आल्सो. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. हम लोग बहुत सारे वीडियोस खोल करके उसको फिर वो नियोसोनिक्स या फिर टॉर्शनल ओजिल की टिप दिखाते हैं, ये करते हैं, वो ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट. Obviously at metros and certain places wherein you get educated people जो Google पे कई सारी चीजें पढ़ के आते हैं, there these things might be useful. So you have to customize according to your practices. Correct. And then you have to use examples which are closer to their hearts. जो day to day वो रिलेट कर सकते हैं, ऐसे एग्जांपल्स हमें अपने प्रैक्टिस में या फिर अपने एरियाज में ढूंढने चाहिए. करेक्ट. सो आई होप दिस आंसर्स डॉक्टर तलवार एंड डॉक्टर संध्या's क्वेश्चन. ओके, सो वी कम टू काउंसलिंग मटेरियल. सो वी हैव 29 people. So again, my boring request. So let me see more faces. मैं थकने वाला नहीं हूं. And see, you also must be experiencing this thing. Those who are on board, the interaction is happening in a better way, and we are trying to give customized answers to their individual queries. तो अगर आप खुल के बाहर नहीं आओगे तो see, it's your loss. Don't see, this is the platform wherein you can make mistakes. Okay, wherein you can ask silly questions which you feel are silly, but they may not be silly. They might be really valuable questions for others as well. So this is the platform you can do mistake. You have no chance to make mistake during your counseling session.
So, make as many mistakes as possible over here, because this is a learning platform. Okay, so we come down to the counseling material part of it. Pratik sir, just can you just repeat that mobile analogy? I think I have missed it. I don't know. Last time I was traveling, so I think I missed No, it. let Dr. Sonia only explain. She has started utilizing that, so that even I Sure. get some rest. Okay. So I'm in a semi-urban type of setup. So दोनों तरह के farmers and like the lower and the lower middle class family comes. तो वो उनको मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. तो आई हैव सेव्ड इमेजेस एंड वो इमेजेस में दिखाती हूँ कि ये एस्फेरिक और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है. तो मुझे लगता है जब हम पेपर पे दिखाते थे ना कैटलॉग, तो वो नहीं समझ पाते थे उतना जितना कि मैं एक इमेज में जैसे गाड़ी का लाइट फैला हुआ है, एक में आपका गाड़ी का लाइट देखिए क्लियर दिख रहा है, या एक में कलर्स के लिए एक गार्डन का सीन है. तो दैट वे दे कैन अंडरस्टैंड फर्दर, क्योंकि मोबाइल से दे आई थिंक दे कनेक्टेड. और कई बार तो लोग सोचते हैं कि यार ये पेशेंट का ही देखा हुआ है पेशेंट का, तो वो ज्यादा कोरिलेट करते हैं. तो मुझे लगता है कि रादर देन दोस पेपर्स दिस मोबाइल थिंग्स वर्क. वो एक पर्सनल टच की तरह होता है कि ये देखिए मैं आपको एक दिखाती. इवन फॉर अपार्ट फ्रॉम कैटरेक्ट फॉर अदर थिंग्स एट टाइम्स वी शो कि ये ऐसा स्क्विंट था और ये अब ऐसा हो जाता है. आप ही जैसे किसी का डाइवर्जेंट स्क्विंट है तो डाइवर्जेंट स्क्विंट वाला फोटो दिखा दिया कि ये देखिए ये भी बाहर निकली थी अब अंदर आ गई है, ठीक हो गई है. तो मोबाइल पीपल कैन कनेक्ट मोर इजली. और वो हमारी खींची हुई इमेजेस होती हैं, तो वो दिखती है कि ये हमारी खींची हुई इमेज है रादर देन अ कंपनीज कैटलॉग और कस्टम. दैट मेक्स अ डिफरेंस. Okay, thank you. Yeah, one more common analogy used by many of them is television, especially spherical or aspheric difference establish करने के लिए. The old kind of TVs with curved screen and now the flat screens. So you can find out a lot of Usually I tell analogies. that analogy कि पहले के will you prefer पहले के टीवी का पिक्चर और this LCD टीवी का पिक्चर? Yeah. Which TV you will prefer to watch now? So that will be different. See, I'll share what I talk. Okay. Okay. I don't use any kind of analogy, mobile, TV, कुछ नहीं. What I say is, because initially I have explained what is cataract. Okay. तो with a model, तो उसे मालूम है कि अपने आंख में ये नेचुरल लेंस था जो ओपेक हो गया है, and now it's time to replace that thing. The model has got a very good aspheric natural lens. I simply explain कि अपने आंख का नेचुरल लेंस जिस शेप का होता है उसी शेप की ये लेंस होती है, so that you continue getting benefits of your natural lens post operatively. So that is what patient is really wishing to hear from, कि benefit मुझे क्या मिले. Correct. So that is what I am saying again and again, you talk in terms of what benefits he is getting. तो उसको विजुअली ठीक है, कोई अगर अफ्लुएंट है उसको विजुअली दिखाना है, fair enough. Ultimately what patient, with my experience, what I've seen is what patient is trying to gain from you is, अगर पेशेंट ज्यादा अफोर्डिंग नहीं है तो भी पेशेंट के दिमाग में वही चल रहा है. सी, let us say patient is again and again coming back to the lowest package of your bucket. उतना ज्यादा अफोर्डिंग नहीं है, या फिर अफोर्डिंग होगा भी तो भी उसकी मेंटालिटी नहीं है खर्चा करने की. He is again and again coming back to the lower package. Let us say the 15,000 one is the lowest package of your bucket. He is again and again coming back to the 15,000 package. Still उसके दिमाग में वही चल रहा है, नहीं ठीक है मुझे पैसा ज्यादा खर्चा करना नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब तो लेंस नहीं है. You are getting my point? Yes. Though he is not willing to pay, he still has got that doubt or concern in his mind कि नहीं मैं करवा तो लूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंफीरियर या खराब लेंस तो नहीं है. और वही चीज वो आपके मुंह से सुनना चाहता है. और आपको दिस इज वेरी ट्रिकी सिचुएशन, और आपको ये भी नहीं बताना है कि ये खराब है, ठीक है, क्योंकि आप डलवा तो रहे हो, लेकिन आपको उसको अपर पैकेज के लिए कन्वर्ट भी करना है. These are tricky situations wherein you have to know, sir,
This is also good lens. Few patients opt for this lens also, और ऑपरेशन अच्छे भी होते हैं. You are able to recollect, मैंने प्रीवियस एग्जांपल में क्या बोला था? कई सारे पेशेंट्स ये रेंज में ऑपरेशंस करवाते हैं. मेनी ऑफ आवर पेशेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर, एंड देन इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ पेशेंट्स अपने इस पैकेज में भी ऑपरेशन करवाते हैं और ऑपरेशन अच्छा ही होता है. आई एम एंश्योरिंग दैट दिस लेंस इज ऑल्सो गुड, बट देन आई एम ट्राइंग टू इनडायरेक्टली पुश. अल्टीमेटली अगर वो नहीं पुश होता है, डज नॉट मैटर, नोबडी इज गोइंग टू हैंग यू. ओके, क्योंकि वो 15,000 वाला पैकेज रखा इसलिए है कि कुछ लोग उसमें से भी ऑपरेशन करवाए, बराबर कि नहीं? कुछ लोग उस पैकेज के लोग भी अपने क्लाइंटेल में है, इसीलिए वो पैकेज रखवाया है. करेक्ट. अगर आपके पास क्लाइंटेल पूरा का पूरा 25 और 30,000 वाला ही है, देन योर स्टार्टिंग पैकेज वुड हैव बीन 25-30. सो डज नॉट मैटर even if that patient is not upgraded to the higher package, right? So coming to counseling material, how do you explain the aberrations? Because I really this is a very good point कि वो natural के shape का है जो आप बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा है. But how do you explain this part कि aberrations वाला part मुझे explain करने में difficulty होती है. I personally do not explain aberrations. If patient is still थोड़ा educated है और वो natural lens, अच्छा फिर natural lens की shape का मतलब उसका फायदा क्या होता है, then I actually explain, this is a spherical part of the natural lens and this is slightly a flattened part of natural lens. इस shape के वजह से क्या होता है कि आपका focusing जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है. यूजुअली जो हम लोग लेंस डलवाते हैं, जो ये पैकेजेस में है, वो ऐसे दोनों जगह से कर्व्ड रहते हैं. So I use my hands. Maximum times I was coming to that, the counseling material. आपके पास कितना भी मटेरियल हो, आप अगर thoroughly knowledgeable है, तो you can use. Right now, I'm not suggesting you all to use only hands, because I have reached this stage after so many years. But then certain things are very important as a counseling material. So to answer Dr. Sonia's question, I personally do not explain the aberrations. लेकिन अगर आपके पास affluent class है, then as you said, you get a lot of there are a lot of posters available nowadays by companies. There are a lot of what we call programs available जिसमें virtually आप दिखा सकते हैं. There are sliders down, then you have the plain monofocal, then you have the spherical one, the aspheric one. Toric आप दिखा सकते हो, toric डालने के बाद क्या होगा. So there are virtual platforms available with these leading companies. If you have got, wonderful, use them. Again, I am coming to the counseling material part of it. If you have not got, and if you are a good user of such lenses, you demand them from the companies. Okay. Now don't ask me names of companies because okay. But many of the leading companies have these virtual platforms. सर जो आप शेप का बता रहे थे, वो फिर से बताइए. जो आप शेप का बता रहे थे कि ऐसे शेप करके मैं बताता हूँ. सिंपल थिंग है, मैं दो लेंसेस को कंपेयर करता हूँ. उन लेंसेस की वजह से फायदा क्या मिलता है वो लेमैन के लैंग्वेज में बताता हूँ. इससे आपके फोकसिंग में फायदा होता है. Because I don't have the model right now. The natural lens in the eye model has got aspheric shape. Okay, तो वो उसके सामने में आंख के सामने दिखाता हूँ. ये देखिए, ये जो है ये कर्व शेप है. उसके पीछे वाला जो है ये स्लाइटली फ्लैटेंड है. इसे हम लोग बोलते हैं एस्फेरिक लेंस. ठीक है. जो नॉर्मली ये पैकेज में लेंसेस है, इसे बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल. वो ऐसे दोनों बाजू से कर्व्ड रहते हैं. लेकिन ये देखिए नेचुरल लेंस कैसा है, एक जगह से फ्लैट है. तो ये जो इस स्पेसिफिक पैकेज का लेंस बता रहा हूं, ये भी एग्जैक्टली नेचुरल लेंस जैसा ऐसा होता है. सो द पेशेंट इज एबल टू विजुअलाइज. करेक्ट. दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज कि आप जितने विजुअली पेशेंट को एंगेज रखोगे, उतना पेशेंट ग्रास्प ज्यादा करता है. ओके. आप सिर्फ अगर मोनोटोनसली या फिर कितना भी वेरिएशन करके पेशेंट से सिर्फ बात करोगे,
तो पेशेंट उतना एंगेज नहीं होता है। ओके, सिंपल थिंग, दिस आई एम पर्पसली डूइंग दैट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट। आज मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, ओके, लेकिन आज आपको मेरे हाथ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। Usually when I'm talking to you, previous sessions, you have hardly seen my hands. You must have seen only face. लेकिन आज मैं purposely मेरे हाथ फ्रेम में ला रहा हूँ। Why? Because this adds visual impact. So these are smaller things of communication. You add visual impact to that. One more thing that I usually do, since ये हाथ से आप कैसे कर सकते हो, effective utilization of your hands. One more thing what I do to make them aware, or make them aware of the seriousness of the surgery. जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था आपको कि अगर 10 मिनट सर्जरी चल रही है तो लेंस इम्प्लांटेशन इज हार्डली 30 seconds or 45 seconds, and the rest of the thing, or the first whatever 9 minutes or 9.5 minutes is what your surgeon is doing for that patient. लेकिन हम लोग उसे प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, करेक्ट। उसका सीरियसनेस कन्वे करने के लिए, नॉट एवरी पेशेंट, बट व्हाट आई डू इज आई सिंपली व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आई मॉडल सामने है, उसको वो आई बॉल दिख रहा है, बट देन दैट इज लाइक अ बिग बॉल टू कन्वे द सीरियसनेस। सी सर, अपना आई बॉल जो होता है, आंख जो होती है, वो इतनी होती है। What I did, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं दिखाया, I related it to my eyeball. अपनी आंख जो होती है वो इतनी होती है, तो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं वो इतने एरिया में करते हैं। Immediately the seriousness is conveyed to the patient. Okay, and then इतने से एरिया में वो जो मशीन की टिप है वो आपके मोतिया के टुकड़े कर रही है, वो टुकड़े यहाँ वहां पे फैल रहे हैं, इतने ज्यादा स्पीड से वो टुकड़े हो रहे हैं, हीट पैदा हो रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ योर आई एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट फॉर दैट। तो इमीडिएटली वो सीरियसनेस कन्वे हो गया। सो यू हैव टू फाइंड आउट, आपको अपने अपने प्रैक्टिस में या फिर अपने अपने एक्सपीरियंस में ऐसी सारी चीजें ढूंढनी चाहिए जिससे आपके पेशेंट, बिकॉज सी मेरे एरिया में पेशेंट जो है वो ये सारी चीजें नहीं समझ पाएगा। if I start showing him the animations and the videos, he's not going to understand. So I have to find out such tricks. So you have to find out such tricks from your respective areas. Certain cities you can utilize animations. Animations are freely available on YouTube. आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट सेशन में किसी ने मुझे पूछा था ये कहाँ से मिलेंगे, तो अगेन मेनी ऑफ द लीडिंग कंपनीज हैव दिस एनिमेशंस विद देम, सो यू कैन डिमांड फ्रॉम देम एंड यू कैन यूज दोज एनिमेशंस इन योर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल व्हाट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इज टू हैव योर ओन प्रेजेंटेशन, दैट इज PowerPoint presentation. Okay, you devise or develop your own PowerPoint presentation for counselor, especially जो counselors है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग फ्लो में कई सारी चीजें मिस आउट कर जाते हैं। ओके, सो जैसे कि अभी लास्ट टाइम कम्युनिकेशन स्किल, आई मस्ट हैव ट्रेन्ड more than 1,000 staff members for communication skill over 17 years, but still I need that PowerPoint presentation for me so that I do not miss out on any important thing. तो PowerPoint presentation बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपके सामने होना। वो समझिए 30 स्लाइड्स का PowerPoint presentation हो गया और उसमें समझिए आपने 5, 6, 7 वीडियोस डाले। Not necessarily you use the whole 30 slide presentation for each and every patient. Okay, these are again tools that are available with you. तो आपको अगर सामने से लगा नहीं ये पेशेंट के लिए ये स्लाइड स्किप करनी है, you can skip slides, but you have to have that flow in front of you. So my strong recommendation for you all would be
you have your own PowerPoint presentation with your own hospital branding. जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आप अपना एक पीपीटी बनाइए। उससे और एक फायदा क्या होगा, जो कई सारे काउंसलर्स जो इमीडिएटली काउंसलिंग के सेकंड या थर्ड मिनट में मेन्यू कार्ड में जंप करते हैं, तो दैट विल एक्ट एज रिमाइंडर फॉर देम कि नहीं, आपको मेन्यू कार्ड मतलब आयल और पैकेजेस में जाने से पहले ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी जरूरी है, so that you go step by step. Many of the times it happens, if we have brochure या फिर printed rate list है, तो हम लोग सिर्फ वो rate list लेके बैठते हैं, but PowerPoint presentation will act as a reminder for you कि नहीं, उससे पहले आपको ये सारी चीजें explain करनी जरूरी है, तो you have to have that PowerPoint presentation with you. Number 2, you have to devise something that a patient can take away with him or her. ब्रोशर हो सकता है, सिंपल लिफलेट हो सकता है, बट नॉट जस्ट अ रेट कार्ड कि ये पैकेजेस है और उसके ये चार्जेस है. नो, दैट हैज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन. इट मे बी कैटरैक्ट, इट मे बी ग्लॉकोमा, इट मे बी लैसिक, व्हाटएवर, बेसिक इंफॉर्मेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके प्रैक्टिस में क्या चीज अवेलेबल है, ट्रीटमेंट ऑफ दैट कंडीशन इन योर प्रैक्टिस. So you boast your technology, you boast experience of your surgeon, you have a small section on your surgeon कि उनका experience कितना है, क्या है, and then you explain about the options or payoffs. ठीक है. Options में भी what I would strongly recommend, you should not have a printed rate card with you. Okay. You can have packages names displayed, but not rates or the prices. Because आप जब वो रेट कार्ड उसके सामने रखते हो, जैसे मैंने बार बार बताया आपको कि एक मेंटल बजट लेके पेशेंट आपके पास आया है, वो इमीडिएटली लाइक वी रीड मेन्यू कार्ड फ्रॉम राइट साइड, सो ही इमीडिएटली जंप्स, उसकी आंख वो फिगर्स पे घूमने लगती है, एंड देन ही इज नॉट रिसेप्टिव टू व्हाटएवर यू आर टॉकिंग. और जब उसके मेंटल बजट के आसपास की फिगर उसे उस रेट कार्ड में दिखती है, उसकी सुई वहीं पे अटक जाती है. तो व्हाटएवर यू एक्सप्लेन, व्हाटएवर यू से, वो वहां पे वो उसका डिसीजन वहां पे फाइनल हो गया है. सपोज आई हैव अ मेंटल बजट ऑफ 15,000 और 20,000, 30,000, तो मैं वहां पे अटक गया, तो वो बार बार आपको 30, अच्छा ये लेंस अच्छा है ना, लेकिन ये लेंस अच्छा है ना, लेकिन बट उसके विजुअल नीड के हिसाब से द होल एक्सरसाइज इज लॉस्ट. We are trying to gather his visual needs, we are trying to gather his other concerns, and then put forth the most suitable package for him. That everything is defeated. So what I would suggest is, आपने explain करने के टाइम जो buckets मैंने बताए, तो आप proper buckets से शुरू कीजिए. Okay, like again I will explain what I do. Suppose मेरे डिस्कशन के समय मुझे पता चला कि नहीं, दिस पेशेंट कैन गो ऑप्ट फॉर गुड लेंसेस. ओके, सो आई स्टार्ट विद दैट बकेट फर्स्ट. सपोज मिडिल बकेट में मैं उस पेशेंट को प्लेस किया, तो आई स्टार्ट विद दैट बकेट फर्स्ट. फॉर एग्जांपल, माय लोअर बकेट इज लेट अस से 15 to 23,000 and medium bucket is 26,000 onwards. So I will start with 26,000 bucket. I will explain all the packages in detail of that medium segment bucket. और उसके बाद में मैं बोलूंगा इसके आगे भी पैकेजेस है, जिसमें आपको, इसमें से आप कोई भी लेंस डलवाइए, आपका दूर का चश्मे का नंबर निकल जाएगा, लेकिन नजदीक के लिए आपको 100% ग्लासेस पहनने पड़ेंगे. If you are saying that you don't want glasses or you want minimum dependence on glasses for near also, तो फिर इसके आगे के भी पैकेजेस है. लेकिन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, आपका नजदीक का काम, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज व्हाई आई कैन कॉन्फिडेंटली से, ओके, विदाउट डिस्कसिंग यू कैन नॉट अज्यूम. यू रिमेंबर दैट यंग लेडी, ओल्ड लेडी लास्ट टाइम, don't assume that whether he is young, I mean she is young or old. You confirm.
तो उसके बाद यू कैन से इसके आगे के भी है, बट दे आर लेट अस से 60,000 onwards. Then you come down to the lower package. There are Indian lenses available also, which start from 15,000. So they range from 15 to 23,000. So फिर वो पूछता है, अच्छा फिर वो 15,000 वाले में क्या मिलता है? Then I will explain that bucket again. But then my approach changes. What I say, these are the original lenses. See, that works at my place. It may not work at your place, original and copy, but then it works at my place. These are original lenses जिन कंपनी ने इन्वेंट किए हैं, उन कंपनीज के ओरिजिनल लेंसेस हम लोग ऑर्डर करवा के इस्तेमाल करते हैं. Indian lenses are also good. So if you are saying, let us say this is hydrophobic, the basic good material lens, that will cost you this much, but the Indian one, this will cost you this much, this will cost you this much. So I am comparing कि इसका अगर समझे 26,000 है तो इसका आपको 15,000 देना है, but this is original, ये मैंने उसके दिमाग में ऑलरेडी डाला है, because I know that that patient can go into this bucket. But I will never ever send patient without explaining all the buckets or the whole range. Okay, मैं at least lower and upper या फिर जो bucket में वो fall नहीं कर रहा है, at least उस bucket के अलावा बाकी बकेट्स के रेंज उसे बता के भेजूंगा. राइट? सो कमिंग बैक टू द मटेरियल, डोंट यूज प्रिंटेड रेट कार्ड्स. Every time your counselor or you as a counselor have to write every time. It's not very tedious thing. किसी भी प्रैक्टिस में 7, 8 या 10 से ज्यादा पैकेजेस नहीं होते हैं. तो एवरी टाइम यू काउंसिल वो 7, 8 या 10 फिगर्स लिखने में आई डोंट थिंक देयर हैज टू बी एनी इशू, बट दैट वर्क्स वेरी वेल इफ यू राइट एवरी टाइम. ओके, थर्ड थिंग what a counselor should have as a counseling material is we get lot of brochures from lot of companies. So वो आपके आर्मामेंटरियम में रेडी होने जरूरी है. You get those brochures from those companies. If at all you get a good educated और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाला पेशेंट है, so you can use, because they are really beautifully made brochures and they have got various analogies, various pictures also. So you can utilize those brochures effectively, SOS. बट आपका खुद का ब्रोशर या फिर एटलीस्ट एक लीफलेट जो पेशेंट बाहर लेके जाए वो बेहद जरूरी है, बिकॉज मेनी टाइम्स पेशेंट इज नॉट टेकिंग डिसीजन देन एंड देयर इटसेल्फ, राइट? सो वो जब घर पे जाएगा वापस से सोचेगा, आपका स्पीच जब रिकलेक्ट करेगा, ही शुड हैव समथिंग इन हिज हैंड टू रिकलेक्ट विजुअली. ओके, so that leaflet or brochure has to be there as a takeaway material, and then this company brochures also can be utilized. Now I come to very dearest part, that is the patient testimonials, which we are discussing. And मैंने जैसे बोला कि we will hold on patient feedback, or rather I would say patient testimonials. There is a difference between patient feedback and testimonial. For me, feedback is more of an objective kind of a thing. Okay, कि आप हमें स्कोर कीजिए, हमें रेट कीजिए, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए. Testimonial is something like the whole experience, what patient experienced right from his or her first encounter till date. उसकी एक स्टोरी लाइन होती है. What we have to gather is a story. Let us say somebody said that we collect, I think Dr. Saxena said you collect video testimonials, right, ma'am? It wasn't me who said it, but yes, we do collect. You do, okay. Somebody said that we collect video testimonials. Yes, sir. From Manjula, from Zamindas, I sent it. Yes. Yeah. So many of us, we collect, can you kindly mute yourselves, all of you? Yeah, thank you. Many of you must be collecting video testimonials. लेकिन वो video testimonial कई बार क्या होता है
You know, as a patient is just saying कि नहीं काफी अच्छा लगा, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, यहाँ का सारा स्टाफ अच्छा है, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट दी, सारे अच्छे प्यार से बात करते हैं. So it becomes monotonous. What as an audience I would love to see is, see when when I came over here, मेरे दोनों आंख में काफी धुंधला दिखता था, छोटी छोटी चीजें करने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी. When I came here, डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छे से बताया कि आपके दोनों आंखों में मोतिया है. और फिर मैडम XYZ ने मुझे पूरी सर्जरी के बारे में जानकारी दी. मुझे काफी सारे डाउट्स थे, लेकिन उन्होंने अच्छे तरह से क्लियर करवाए. लेकिन सर्जरी के दिन मुझे काफी टेंशन आ रहा था, क्योंकि इसके पहले मैं कभी किसी सर्जरी को मैंने कभी फेस नहीं किया था. ऑन द डे ऑफ सर्जरी व्हेन आई अराइव्ड, एवरीबॉडी वाज वेरी कोऑपरेटिव. यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा ख्याल रखता है. उन्होंने मुझे अच्छे से पैसिफाई किया. अंदर जाके बाहर आने में मुझे हार्डली 10-15 मिनट लगे. ऑपरेशन हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला. बाहर आने के बाद 15-20 मिनट में आई वाज डिस्चार्ज विद डार्क ग्लासेस ऑन माय फेस. एंड देन अभी लगभग 15-20 दिन हो गए हैं. मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पहले से तो काफी बेहतर लग रहा है. छोटी छोटी चीजें जो मैं नहीं कर पा रहा था, वो अभी मैं काफी अच्छे से कर सकता हूँ. आई एम प्लानिंग माई अदर आई सर्जरी इन कमिंग वीक. See, this whole narration has got a storyline from day one to day now. So as an audience, I am more interested in listening to stories rather than just listening to a feel good kind of things. तो ये जो टेस्टिमोनियल्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो टेस्टिमोनियल कलेक्ट करना ये भी आर्ट है. Like somebody from, I think, Farande Eye Hospital, you asked me, right? कि we ask for testimonials. But how do we ask? Patients may feel. Correct. So that is an art. How you ask for testimonials. If you are starting it afresh, okay, I'll give you a trick. If you are starting it afresh, yeah. Can I ask, should you, like you said, this telling of a whole story, should the counselor be prompting the patient, like asking them, how did you experience? Yes. And yes. then, but would it become too long? Would it need to be edited? That should be the way we go. Yeah. At times it needs to be edited. Again, I mean, I'll come on that, in my next part, that is utilization of these testimonials. Where we want to utilize it all depends on that, what should be the duration of the testimonial. First, let us see how do we collect or how we ask for. So those who are starting it afresh, or even those who are doing it, एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं. अपने पहचान के या फिर डमी पेशेंट के 1-2 टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करके रखवाइए जैसे आपको चाहिए. Okay, with a storyline, and use those testimonials as a reference testimonials for new patients who want to give testimonials. So obviously क्या होता है, जैसे we visit some exhibition, let us say, and they come back with a feedback book or a slam book, and sir आपका एक feedback. What we usually do, we read ऊपर के 3-4 लोगों ने क्या लिखा है, and then we tend to repeat that thing. So this is a human tendency, human psychology. So this is, have you ever seen, any of the donation box in any temple empty? You have never seen, right? No. कभी ना कभी तो वो empty करते होंगे. तो कभी ना कभी तो वो इंसिडेंस आना चाहिए कि उन्होंने just empty किया और रखा और मैं वहां पे गया. But it never happens. It's a psychology. Unless and until there are 2-3 currency notes, I don't feel like putting my donation into that, right? So it's like that. So never ever keep your even feedback box, if you are having those, especially who are having NABH, we have feedback box. Don't ever keep your feedback box empty. So keep at least 2-3 feedbacks in that box. So similarly, while collecting testimonials, you have to have reference. You can collect testimonials in written format also. You can give them simply a sheet of paper. जब follow up के लिए आते हैं, you make some comfortable arrangements in your hospital. Sir, madam, आप यहाँ पे बैठ के you can simply write your experience
For your reference, these are the feedbacks जो हमारे पहले पेशेंट ने लिखा है. आप ही लिखिए. Okay, for the reference, आप ही लिखिए. तो फिर वो स्टोरी लाइन पढ़ के they try to reproduce in the same manner. If you are collecting video and you do not have time to show the reference video, the person who's collecting testimonial has to be trained enough. Especially while editing, editor का काम अगर आपको कम करना है, तो you have to explain or brief that patient before you start recording testimonial कि आपको expected क्या है, कि आपके जैसे मैंने स्टोरी लाइन बताई, आपके आंख में मोतिया था तब आपको क्या क्या दिक्कत आ रही थी, आप यहाँ पे आए तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ऑन द डे ऑफ सर्जरी आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और अब आपको कैसा लग रहा है. These are 4 parts of your testimonial, and then I sit in front of the patient to ask the questions. शुरू कीजिए. तो वो बताना शुरू करता है. Then you have to just prompt him with 1 or 2 words so that can be edited easily later on. But for that, you have to prompt or brief that patient before you start recording the testimonial. Especially video recordings के लिए there are certain things. जैसे मैंने बताया कि flow is important or storyline is important. At the same time, choice or identifying correct patient is also very important. Uska diction, volume, everything has to be good. Nowadays, we have got a lot of accessories which you can equip your hospital with. Like mobile के लिए wireless microphones आते हैं. So you can utilize all those things. But again, I mean the patient himself or herself has to be confident. So you screen those patients. Otherwise, the whole purpose or the whole exercise is of no use. So you screen and identify a patient and use a proper technology to record your testimonials. जो आपको लगता है कि जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स अच्छे से नहीं दे सकते हैं, उनसे आप रिटर्न टेस्टिमोनियल्स लीजिए. ओके, रिटर्न टेस्टिमोनियल just don't collect on a sheet of paper. I mean, you have to collect it on a sheet of paper, but then you have to click a photograph also, so that you can utilize those testimonials later on. So you have to collect photograph and a written testimonial. Regarding video testimonial, number 1 was storyline. Number 2 was a proper presentation or diction and volume. Number 3 is aesthetic value of that video. Okay. Many a times the angle is not proper. हम लोग ऊपर से पेशेंट का वीडियो लेते हैं. हम लोगों के पास ट्राइपॉड स्टैंड रहता है, वो प्रीवियस पेशेंट के लिए जहां पे एडजस्टेड था वहीं पे हम लोग लगा देते हैं. बट देन इट्स समथिंग लाइक, आई जस्ट move my laptop and show you. No, it is like this. Many times it is like this, or sometimes it is like this. These aspects are very important. If you have seen or if you have observed me over last 7-8 sessions, I don't know how many of you have observed, I am always on this side of screen. Do you all agree? Have you ever seen me sitting like this in the center of screen? Always on one side of screen and slightly tilted. This gives good aesthetic value to the visual, right? This gives good frame to you. Now, because I am talking over laptop and I am using my progressives, so I have to keep my laptop, slightly down from my eye level. But ideally, the frame has to be like this. Okay, at eye level, camera at eye level, and I'll just adjust and tell you. It has to be just this, till chest level. That's it. You don't have to zoom in too much or zoom out too much.
while recording video, it could be this simply till chest level and one side of the screen. This gives good aesthetic value to the frame. See, all these are important because you want your audience to listen to this, right? आपके ऑडियंस को वो सुन के उसका इम्पैक्ट आने के लिए हम लोग ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं. अगर हम लोग बस करना है इसलिए करते हैं तो फिर देन द ऑडियंस विल आल्सो नॉट एंजॉय. ओके, now I come back to I come down to the utilization of these testimonials. Written testimonials, you can simply prepare, as I told you, you have to collect photographs also. I'm sorry, I have not incorporated them into the presentation. I mean, I'm not having any presentation, but then I'll just show you on my mobile screen. Written testimonials, you can simply prepare certain posters for your social media thing, number one, or you can you can share them on the WhatsApp. आपके पेशेंट ने पूरा का पूरा एक पेज लिख के दिया है. Okay, you can utilize them in different ways. Number one is you have very 2-3 important pointers from that which talks good about the experience or which talks good about the whole hospital, and then you simply prepare a poster like this. I don't know if you are able to see. Just see. Is it visible? No, it cannot be focused. No. Now, थोड़ा what I'll do is I'll share these on the group. These 2-3 examples I'll share on the group. So one way to do is you just have 2-3 pointers from the testimonial and you prepare a nice poster with photograph. Photograph bhi lena ek art hai. Again, we don't want a passport size photograph. Ideally, if you have a young patient, or nowadays even oldies have these DPs and status fever, so they all are aware of what DP is. So ideally what you should ask is कि मैम सर आप अपने डीपी पे जो फोटो रखना चाहोगे ऐसा एक फोटो हमें भेज दीजिए. Okay, so usually you end up getting a good photograph. Or if you are clicking, again the rule is same. It has to be 1/3 and one side of the screen, so that this side you have blank with a plain background so that you can write down certain things. Okay, once you get these examples on the group, you will be able to relate to that. अगर आपको किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा अच्छा हैंडराइटिंग वाला टेस्टिमोनियल मिला है तो यू कैन यूज दैट शीट ऑफ पेपर आल्सो. एग्जैक्टली वैसे के वैसा यू डोंट रिप्रोड्यूस बाय टाइपिंग. अच्छा हैंडराइटिंग वाले टेस्टिमोनियल का फोटोग्राफ भी आप यूज कर सकते हैं. रिटर्न टेस्टिमोनियल आई एम टॉकिंग अबाउट. Sir, it's permissible to, if the patient has written a long testimonial, to pluck out a few things and use that. That's okay. Yes. No problem. You are reproducing as it is. One thing I forgot. I'm sorry. I mean, thanks for reminding me. One thing is, while collecting testimonial, you have to take consent of the patient. See, many a times we have seen that patients are quite, especially LASIK patients. Okay, they are quite apprehensive about utilizing their faces and testimonials in a public forum. So it's very important for you to take a consent. You can have simple 2-liner consent, and you can take a form, signature on that form. But it's very important to have a consent. In case of written testimonials, you can take a verbal consent. That's not an issue, and you can just inform them, sir, we will be utilizing this on social media, and then for showing it to our own patients. जैसे कि आपको experience आया कि before surgery you had a lot of doubts, so your experience may be helpful to a lot of patients, so you will be utilizing for such patients. So usually patients are okay with it. Okay, but it's very important for us to take consent of such patients. Coming written testimonial, again you can utilize the whole testimonial
as it is in the written format on social media platforms. Second medium where you can use is, if you have a nice display area, you can display in the waiting area, but make sure that you keep on replenishing or changing them, because usually what happens is शुरू में wow काफी अच्छी आइडिया है, हम लोग लगा देते हैं, और फिर 2 साल 3 साल जब पेशेंट बार बार आता है वही 4 फेसेस दिखते रहते हैं, and we simply forget to replace them. So make sure that you replace them. But that's again a good idea, because as I said, during waiting your patient is observing and watching your waiting area, so that adds impact. Third thing what you can do is, you can simply if you have collected a lot of testimonials with you, you can simply prepare a spiral bound booklet. Once you have collected 50, 100 odd testimonials, you can have spiral bound booklet and keep it just like that in the waiting area or in counseling. So during waiting, the patient can go through the testimonials what you have collected. Okay, so this is how you can utilize written testimonials. If you have got LCD screen, you can use written testimonials like what I will be sharing with you on the group. जो हम लोग posters create करेंगे, वो poster आप LCD पे display कर सकते हैं. Video testimonials are primarily used for display in the waiting area LCD. Okay, so if you are displaying in on the waiting area LCD, length does not matter. Make sure that it's not too boring. I mean, 10 minutes and 50 minutes testimonial, people may not listen, but then usually around 5 to 7 minutes is okay when you are sitting in waiting area and listening. If you are sharing it on YouTube, make sure that it's not beyond 2 or 2.5 minutes. So your editor has to take care of all those things. If you are sharing on social media, it has to be maximum 2 minutes or at the most 2.5 minutes. Okay, if you are sharing it on let us say WhatsApp, it has to be maximum 1 minute, I would say, because we keep on getting a lot of forwards on WhatsApp. So if a person is not interested, he'll just skip that thing. But then wo 1 minute mein maximum message we have to put it across. So this is where you can, just a moment, I think Ophthall people are contacting me. Hello, Mr. Hari. Sir? Just a moment. Hello. Yeah, it's going on. You want me to close that? No. Okay. Fine. Yeah, we will be closing it in let's say another 5 minutes. Okay. Sir, can I? So as you told, like the waiting area is a very important place for the patient who come. Okay. In that thing, we utilize in a different ways. Like the post-op patients who come now, the first day post-op or the 10th day post-op, when they come here, we have a Google sheet. Internal Google, not a Google review. It's a Google sheet where they give us a review of what we do and what they have experienced. Right. Okay. So this Google sheet is the internal thing where our HR could see, our doctors could see. It's like that. So as you said, the feedback form. It's something like that. It's a Google sheet feedback for the surgery patients. As well as this also we implement for the OPD patients also. This is not only for the cataract, the surgery patient. We implement even for the OPD patient. The patients who come after their consultation and everything, we ask them to give them the feedback through that Google feedback sheet. Okay. So sometimes when they are dilated, they won't be able to see. So what we say, sir, we will share you the Google sheet feedback form to your WhatsApp. Can you give us a Google? Can you just give us a feedback of yours, whatever you have experienced? So after going home, maybe the next day they give us. Though they need not come to the center, they can give us the feedback through that sheet. So that's an internal thing where we can see, even if they have something, not only the good things, even the bad things, whatever they have experienced, so that we can correct ourselves. Correct. So even that is there in that sheet, sir. Yeah. The only suggestion would be try to extract that video so that you can utilize that. Not the video.
It's not the It's a video. form. It's It's a a form. written It's a written form. Yeah. feedback form. So that's kind of what. a Yeah, thing. that's what I am saying. That's a feedback form. Okay. What I'm talking about is a testimonial, which has got no objective questions. It's a plain sheet of paper, or it's a plain canvas. You know, whatever I want to draw, whatever I want to write, I just go on writing. So usually feedback में हम लोग क्या करते हैं? We ask कि rate us on following parameters on the scale of 1 to 5. Cleanliness in the hospital, so I write 4. Behavior of the staff, I write 3. So it's for our internal evaluation. That's fine. I mean, that is for your internal thing. This I'm talking even about. The suggestion, even the suggestion, Even we the give them the box. or the complaints, that is for our internal improvement, right? This testimonial I am talking about is for utilizing it for your prospect patients. You're getting my point? So feedback is different from testimonials. That's what I started my point with. Feedback usually we all do, or most of us do, but then testimonials are totally different. That has to have some storyline, so the patient is interested in reading or listening to that. So, correct? Yes, ma'am. I just wanted to clarify. You were saying that we must take consent, a written consent. So in the situations in which the patient doesn't want, let's say, their picture, but they're willing to give something written, for that verbal consent is all right? Verbal consent is all right, but then make sure that you do not utilize that. Because, if a patient has objected for, utilizing the picture, then they probably won't like their name. Probably, yeah. So, I mean, see, and that's not for that particular purpose. For our purpose, it's not of use to us then. It's not of use for this purpose, the one we're discussing. For promotion, but you get a lot of valid points, through. See, I'll tell you, if you are collecting, let us say 10 video testimonials. Out of 10 video testimonials, usual experience of mine is usable. Consider all 10 have given you consent. In spite of that, usable video testimonials would be maximum 4 or 5. 40 to 50% are aesthetically, volume wise, everything is perfect. So usable consents are, usable video testimonials are 4 to 5. And written testimonials, if you are saying, if you want to use them as it is with good handwriting, they are hardly 1 or 2. Okay. With photographs, if you are preparing a poster, you have to make sure that you collect good photographs. Then all 10 can be utilized. But then if your staff is not trained how to collect good photograph, what should be the frame, how should be the lighting, then probably the utilization becomes a concern. A simple thing, you have to take care of a lot of things. I'm sure this is not a photography class, and I'm not the expert of photography, but a simple thing that makes difference. Just watch my screen or watch this frame, and you will be able to make out the difference. See, as I said, I am sitting in my, children's bed. Okay. And there was a light issue over there. And obviously I had to hide certain things. So I had to sit in a particular direction where light is an issue. So I had to simply add this factor to my face so that, the frame is aesthetically. So these are very small points which we have to take care while clicking a photograph or while recording a video. Okay. And excuse me, sir. Yes. Sir, I have shared in chat box. You can just see that, sir. I've shared a testimonial given by one patient, and we have taken that passport size photo, and we have done artwork. I've shared in chat section. I'm not able to see, ma'am. Is it? Yeah. Okay. Then I'll share you once again, sir. You have shared it with everybody, right? Yes.
Not able to see it. Yeah. Okay. Okay. I'll share it. You can share it in the group, maybe. Yes. I think you are not able to share in the group. I think only the group admins can share. So I'll you share can to send. you, sir. Yeah, I'll share to you, sir. You can send it to me personally, and then if that is a good example, I'll share it in the group so that everybody Yes, can. sir. Yes, sir. You, I think so. You must, sir, because you Yes. can see our hard work, effort. Yes. I'll definitely do that. Sure. Okay. Yes. So as far as counseling material is concerned, this kind of additional things are for whenever your patient is asking. See, we talked about the promotional aspect of testimonials, like the social media platform or the LCD display or the booklets or simple in-house waiting room display. These are the promotional aspects of that. But more than that, when your patient is has got certain concerns, so that acts as the pacifying tool for such patients also. Because if your patient, let us say, you have got two patients lined up or waiting in a queue for counseling to be done, and simply you can hand over that booklet to such patients. Sir, I'll attend you in 10 minutes. Meanwhile, you can read what our patients have to say about the surgical experience of theirs. So that is how you can utilize these testimonials in different ways. The first and foremost thing is you start collecting those testimonials. One more important tool, and I think with that we will wind up. It's already 8:15. One last important tool that every counselor has to have, I feel, is ready numbers of your patients with their consent, that if you want to refer them or refer their name and number to certain patient, would you be willing to share your experience over telephone with our future patients? You're getting my point? So you identify certain patients who are happy, satisfied, who have got a different kind of experience, and those who are overwhelmed with your experience and the treatment, and something different you have done with such patient. Like as I said, the first short GA case of our city. So, if the next patient is coming and who's really concerned about his child, that his child is just 1 year, 1.5 year, और आप GA में करोगे, कैसे होगा, क्या होगा? तो if I have consent of my previous patient कि आप इनसे बात कीजिए, इनके बेटे का, बेटी का ऑलरेडी, या फिर इनका ऑपरेशन ऑलरेडी हुआ है इसी टाइप का, it may be multifocal patient, it may be toric patient, anything, but you have certain patients identified readily available with you with their consent कि मैम अगर ये सर आप अगर मैं किसी पेशेंट को आपको फोन करवाऊं तो would you mind? If you have certain numbers and if you are referring certain patient, while referring आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जब फोन करोगे आप सर उनको, तो जस्ट सी वेदर दैट पेशेंट इज इन अ पोजीशन टू टॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट. ठीक है, अगर नहीं तो वो आपको कॉल बैक करेंगे. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर योर पेशेंट कॉल्स योर प्रीवियस पेशेंट, योर कॉल हैज टू बी that I have referred your number to such and such patient and he or she might be calling you. So it would be really kind of you if you can share your experience with them. That is very important tool, which usually बहुत कम बार हम लोगों को use करना पड़ता है, but especially exceptional conditions जिसमें आपको ये utilize करना पड़ सकता है, you have to have certain patients' names and numbers ready with you. Okay. So with that, I'm done with my today's session. There is slight change of plan. Though in our schedule we had written it's going to be telephonic communication. We will take telephonic communication next Saturday. हम लोग कल mock sessions लेंगे.
As I said last time, आप में से I will identify and nominate few members as a counselor and certain members as a patient. We'll take certain situations. So this is for our learning. Okay. So as I said, जहां कहीं हम लोग मिस्टेक करना अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ये प्लेटफॉर्म है. ओके. सो दिस इज, यू ऑल आर शार्पनिंग योर सॉस, करेक्ट, सो दैट कल जब आप काउंसलिंग रूम में बैठोगे तो विद दैट सॉ यू कैन कट seamlessly and smooth, right? So we'll see you tomorrow. If you all have any one of you has any question, you can ask tomorrow. We'll have a lot of time, 2 hours mock sessions and open discussion. Any question right now? I am okay with continuing till 9 o'clock, but then I am sure, not all of you are okay. So any question, quick question, anybody wants to ask, or we'll wind up? So you mentioned how long the testimonial should be depending on what platform we're putting it on. Could you just repeat that? See, if you are displaying it in waiting room, it could be 7, 8, 10 minutes. That's not an issue. Okay, but for YouTube, it has to be maximum 2 or 2.5 minutes. Okay. The same YouTube link, you can share it on your various social media platforms like Facebook or other things. But if you are sharing it on the WhatsApp group, we forward to various WhatsApp groups, so it at the most it has to be 1 minute, according to me. Though we have a facility to share 2.5 minutes video on WhatsApp. That depends on the size MB. But the length, according to me, should be 1 minute 15 seconds at the most. 1 minute should be fine. I'm actually very hesitant to showcase these testimonials because I feel at times it is like self-boasting form of things, because we ourselves are posting our patient. तो in the back of my mind ऐसा मुझे लगता है कि हम अपने आप को self post कर रहे हैं on the social media. So I was always hesitant to. No, you have all rights, because you are not boasting. Your patients are boasting your practice. Okay. You are not saying that see, मेरे patient ने ये कहा, मेरे patient ने वो कहा, नहीं. आपके patient आपके लिए बात कर रहे हैं. Okay. So with that, we'll wind up, and tomorrow again, my sincere request, as many of you as possible, try to get involved for your own learning. Okay. Sure, so good night and have a nice, wonderful weekend. जो भी बचा हुआ है, ठीक है? चलो. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.